Sir, now Sulta is not even 86. It is 87.5. Do you want us to ask, or will you resign on your own? Sir, anyway, sir. But what will the finance minister say to us? You're wrong. Rupee is not getting weaker. Dollar is getting stronger. And we have to accept it. What does it mean? Sir, the food inflation has risen from 7.5% to 8.4% in 1 year. Sir, the common man, especially the middle class, is struggling with high prices and very low wages. The so-called tax relief benefits only 2.5 crore people at the most. That is hardly. कृपया आप खड़े मत रहें, कृपया बैठ के बात करिए। दिलकेश्वर जी, सदन में दिलेश्वर जी, कामत जी, क्या तरीका? Sir, the so-called tax relief, the so-called tax relief benefits only 2.5 crore people at the most, sir. It is only 1.75% of the population. Why 98% of the Indians face rising costs? This is intentionally done not to benefit the common man. So once again, sir, the BJP government focused on headline management instead of real fiscal management to attract the voters of Delhi, and they succeeded. They announced no tax on income up to 12 lakhs. They claim this will boost the restart economy. India has a population of 140 crores. Only 8 crore people, that is 5.7%, file income tax returns in 2023-24. These are the direct taxpayers. Out of them, 4.15 crore people earn less than 50,000 rupees a month. 1.5 crore people earn more than 1 lakh a month, so they don't qualify for the tax benefit. That leaves only 2.5 crore who may benefit in this, and which is 1.75% of the population. So this would help BJP win votes. And sir, this announcement was made publicly in Parliament, and our great election commission didn't even object to it. This populism method announced there, sir. When has the election commission been fair, sir? So the Delhi elections are over now. You have won. So at least now admitted, the budget headline grabbing move to raise the income tax exemption threshold of rupees 12 lakh is an attempt to placard small portion of Indian middle class who are living in cities and the opportunities are less, salaries are low, and races are far apart. Sir, they may enjoy for a year or two. They'll be happy about the extra thousands in their pockets. But the alarming rate of inflation, especially on food and essentials, will catch up in 2 years if growth stagnates. This measure is a mere short-term economic sugar rush and not a sustainable solution. Sir, meanwhile, India's per capita income in 2022-23 was 1.7 lakh per year, or you can say 14,000 rupees per month. In rural India, it was even low. It was 85,000 per year. Just 7,000 per month. The remaining 98.25% of Indians, of whom this 12 lakh income tax relief is a non-issue. They are the real Indians who have been ignored by this budget. Yes, sir. They are they are unemployed, have no jobs, or earn just enough to survive. They also suffer from rising fuel, food and essential costs, just like these 12 people who are getting 12 lakh benefits. While I welcome the reduction in income tax move for the relief it brings to a small portion of the middle class, it's very easy to get confused and assume that only those paying income tax are bearing the brunt of nation building. Every single citizen of this country is paying dearly through indirect taxes. Reality check, sir. With your projected vote, we will not have a growth rate of 8% every year for at least next 10 years. We will not be able to see income growing fast enough to match the inflation. We also call the taxation idea superficial because the budget fails to address the growing wealth divide. The top 1% of India's population holds more than 40% of national wealth. Instead of a progressive taxation of the ultra-rich, this budget, like always, relies on high indirect taxes on essential goods,
forcing the common man to bleed dry for the mere survival. Sir, top 5% of the Indian population hold nearly 60% of all wealth. If we calculate per capita GDP of the remaining 95% against the 40% of the wealth, the reality of our economy is that we are lagging behind the sub-Saharan African countries. Look at the incredible high fuel prices. Throughout the COVID time, the government made bumper profits of taxes and excise on fuel when the global markets were low. Sir, the total contribution of petroleum sector to your exchequer in 2019-20 was 5,55,370 crores. In 2020-21, it was 6,72,780 crores. In 21-22, it was 7,74,425 crores. In 2022-23, it was 7,48,718 crores. In 2023-24, it was 7,51,155.9 crores. Sir, the last 6 months alone, you have collected nearly 3,39,185.5 crores, which is a provisional amount. At least, sir, now, since you made huge profits in the price of petrol, especially with the Ukraine war, what did you do? First time in our country, we heard the terminology, windfall taxes. When Russia was selling fuel at $60 against the market price of $120, you allowed Reliance Industries to make windfall profits. You allowed all your friends to make windfall profits. You could have passed the 50% price reduction to our poor Indians, which should have brought in growth. At least now, sir, with the increasing inflation now, you have so much of money in your kitty, the name of excise and cess. Why don't you remove it and give it to a common man? The 98% of the population will benefit out of this. Do it. Sir, but what have you done? You have done welfare cuts and neglect of the work. The government has now, again, our finance minister, Tirumati Nirmala Sitharaman, is boasting that she has reduced fiscal deficit. She is never available. It is between 4.5% of the GDP. Sir, at what cost have you reached this figure of curtailing the fiscal deficit? Sir, you have cut the Manrega funding, which remains stagnant at 86,000 crores, despite a record low of unemployment. Sir, SC/ST education funds are unchanged, making higher education for them unaffordable. Sir, food prices are increasing. The poor man is suffering. But what have you done? Food subsidy cut from 2,05,250 crores to 2,03,000 crores. Sir, Pradhan Mantri Awas Yojana slashed by 13.5%, affecting affordable housing. But you claim in the president's speech that you are going to build houses, 5 lakh houses, 10 lakh houses, sir. I wonder, with this fiscal cut, how are you going to manage to do that? Sir, Jal Jeevan Mission funding down to 67,000 crores, lower than spending the last 2 years. Sir, Honorable Chairman, sir, in 2019, you created a new ministry called Jal Shakti Ministry. Everyone wondered, what are you doing? Why are you renaming it? But you said, we are renaming it because we are going to interlink the rivers of India and ensure there's no drought, there's no flooding in any part of the country. Please, sir, give us a list. It's 11 years now. How many rivers have we interlinked? How many droughts have we stopped? How many floodings have we stopped? Yes, nothing. Zil, sir. Sir, at the time when mental health programs spending should be increased because of the upcoming inflation and joblessness, you have reduced it from 133 crores to 90 crores, ignoring the growing crisis. Sir, employment generation is a need of the hour, but no major initiative have been taken for job creation, despite 2.5 crore people being unemployed. Hence, MSMEs, which provide 45% of India's export and employment and employ 7.5 crore people, received no tax relief or any support from this budget. Sir, 60 to 70 lakh young people enter the job market annually. Yet, no plans exist to address the employment needs. All the PSUs
have been sold, probably on the process of being sold. Earlier, we used the public sector companies to generate employment for our youth. But now, sir, even that is not in your hands. Now we have to go beg Adanis and Ambanis and Tatas to provide employment for our youth. Sir, railways, sir. Railways are very, very important for us. And now, what have you done, sir? You have reduced the funding for railway projects from 34,000 crores to 32,000 crores. When we really need more investment, especially when we have seen more than 200 rail accidents the last 5 years, and especially when the need has come to improve the Kavach system. Sir? Kindly conclude. I'm the main speaker, sir. First, but your time has been allotted 29 minutes. And there are 2-3 speakers. Sir, if you take my time, what will I do, sir? Let me allow to speak, sir. I'm just only... No, I'm aware, sir. I'm aware. You must be aware. Sir, let the finance minister come and reply, sir. You don't reply, sir. Wait, sir. So, with the funding for the most important to avoid railway accident, which the Prime Minister himself has said is Kavach. The Kavach system has to be implemented so that we can avoid this head-on collisions with railways, where thousands of our Indian lives have been lost. Sir, right now, with this budget, only 5% of the entire railway network can be covered with the Kavach system. So you have no value for the common Indian who will travel by train and who will take the risk of meeting with rail accidents. Sir, and the finance minister said that she is introducing a new Udan scheme in the budget, which will improve air connectivity. I was quite surprised. Not bad. She's announcing because some new airport is coming for BR. That is very good. Sir, she has slashed the Udan scheme budget from 800 crores to 540 crores, making air travel more costlier for common man. When you said new means more funds should have come. But I think, sir, this is just an eyewash. Sir, let me tell you, sir, the next major hindrance for the common man, 98% of the population, is the highways, sir, which collect massive tolls. And, sir, just tolls. But if you travel on the roads, it is the worst roads you can ever travel. Sir, Tamil Nadu is going to get more tolls. Sir, in fact, sir, I really wonder. I asked the finance minister, I would have asked her if she was here, but she never come here. Sir, to her, when a person buys a new bike, motorbike, or new car, or any vehicle, sir, you charge them GST, which is divided by the state and the center. Cess, which goes into your kitty. Excise, which goes into your kitty. And the union government also charges road tax at the time. Sir, I am wondering, why should road tax be collected for a new vehicle? Because you don't lay any roads inside the free roads. All the roads laid by the union government is all toll roads. Anyway, the common man pays for the tax. Sir, to top it all, what have we done, sir? The finance minister has done double taxation. So we are trying to get rid of double taxation. Now, a common man buys a motorcycle, he has to pay GST, sir, for a new vehicle. Okay. Sir, when in a rush, he wants to sell the bike. Sir, he can't, because he wants to sell the bike, get the amount, whatever he gets for the second-hand vehicle, and put it as a deposit to get a new bike. But if he sells it to any dealer, he is gone, sir. He has to pay 18% GST on the difference. Is it fair, sir? How many times he will pay GST, sir? This is double taxation anyway, okay. That too when you want to increase demand. You want to increase demand for production, for sale of motorbike, sale of car. This goes totally against your principles, sir. Sir, again, we are talking about make in India. Sir, as our opposition leader already said, it is never make in India. It's just an assembled India. Sir, during the UPA government, we found Foxconn and Flextronics, who are the bases now set up in India, which are producing the iPhones. Sir. So right now, all we are doing is assembling iPhones and selling it to, exporting it. But what are we doing? The union government is giving performance-linked incentive to every iPhone assembled in India, while as none of them are manufactured. So basically, a huge subsidy is going on the assembling of iPhones, sir. And another sad thing is that even those assembly lines are imported from China.
Every part which is made to make for any new electronic unit is now coming from China. We are just assembling. Sir, even a power adapter, we don't have know-how. How to make a power adapter in India? It has to be imported from China. That is a sad state. Sir, the trade deficit with China is still high. For the year financial year 2024, India's trade deficit with China surged to $85.1 billion. And we continue importing critical components for electronics, pharmaceuticals, and machinery. Sir, in fact, for every mobile phone, the displays, the batteries, the processor are still being imported from India. Sir, we do not have invested, we don't say, to make sure that we can have the facilities or no. No, sir, sir, we can adjust the time with others. Don't worry about it, sir. We'll adjust. And also the automobile sector are still mostly dependent upon this. Sir, we have to become self-reliant. When are we going to become self-reliant? Sir, this story reminds me of what happened when the United States imposed tariff on China for certain goods. Sir, China did nothing. China went straight to Brazil, assembled there, because Brazil had a treaty with US, free export. They exported. This is the same thing which we are following. We are assembling in India from all the Chinese parts. Sir. This is not this. Sir, again, sir, if you really see, sir, even in these supply chains, it is dominated by three players: Ambani's, Adani's, and the Tatas. They have ensured that they're there. Sir, if any multinational have to step into India, they can enter India only with Ambani's, Adani's, or Tata's. See, even a coffee shop can't come into India. Starbucks, because they had to have the Tata's brand name. Sir, we have to make, even the media space is completely taken over by the other. There's no Disney, there's no Star, everything is now owned by the Ambani, sir. Sir, yes, only one channel. Sir, we all know, moment we say energy, or moment we say solar, there's only one company comes to our minds. Adani. The only person who has a monopoly over there. Sir, he doesn't have monopoly on this. Sir, I sometimes wonder what the Competition Commission of India does. He owns all the ports. He owns all the airports. Yeah, he's a monopolistic in power, cement, and every high-risk market. He is the monopoly. Already, sir, but nothing can happen to him. 20 sir, minutes. Let me come. Please, 20 minutes already you have taken. Sir, we have more I have time. Sir, I have time. You have time 20 Sir, please don't disturb me, sir. Please don't disturb me. The chat shouldn't disturb the speaker. Sir, let me come to the main point, sir. Sir, this unfair treatment for the southern states. Sir, the eye of BR elections, we ensured government sufficient schemes like the Western Koshi Canal project, Makna Board expansion of Patna Airport, and development of Brownfield Airport in Pitta. Sir, what about Tamil Nadu? What about Kerala? What about Karnataka? What about Telangana? Sir, maybe next year, Tamil Nadu and Kerala will see a bonus of a lot of announcement because our elections are coming next year. But even that, it will be mere announcements. But nothing will come into India, to Tamil Nadu. Sir, Tamil Nadu's share in tax pool remains stagnant 4.1% against Uttar Pradesh and BR, which is getting increased allocation. Sir, the Kanyakumari Thiruvananthapuram industrial corridor has been ignored again. Sir, no incentive for IT hubs in Bengaluru, Chennai, and Hyderabad, despite their contribution to the economy. Sir, just last week, sir, the union government has taken away nearly 2,000 crores meant for Tamil Nadu students and divert to other states. Have we ever heard a union government punishing the students? Sir, we are very, very clear that we will never, ever accept three-language policy. My Chief Minister, Muthuvel Karnataka Stalin has said, you try whatever you want. Three-language policy will never come into Tamil Nadu. A three-language policy will never come into Tamil Nadu. And we will ensure our students are not deprived. They will be taken care with our own funds. Sir, today, the most successful states in India is Tamil Nadu. Because we follow the Dravidian model, sir. The last session, sir, there were some statements made by our Honorable Finance Minister. We always say in Tamil, Vandare Varavikkum Tamil Nadu. We always are very nice to everyone. Sir, we are never against Hindi. We are only against Hindi imposition. Sir, I like to say, there's a statement made by R. Vijaya Shankar,
who was a former editor of Frontline, he says very clearly that Mrs. Nirmala Sitharaman studied in SRV, Sita Lakshmi Ramaswamy College. She studied there, sir. This Vijaya Shankar's sister also studied, and he's very proud of it. Because, and said they all stayed in a nice Agraharam, where there are no intruders, only their community stayed. And no one has ever stepped inside the Agraharam or disturbed their college from them not to study Hindi, sir. Today, if Finance Minister Nirmala Sitharaman has achieved these heights, it's because of only one man. It's because of Periyar. Because of Periyar. Because the freedom movement to study came into Tamil Nadu. Otherwise, the finance minister wouldn't have come today because she was born in Periyar land and she should never, ever forgive it. But sir, again, I sometimes wonder what is the finance minister angling? She is the topmost post now. I don't know what is the other post she is angling for. Because she's in Rajya Sabha, she might angling, I think, assume the other topmost post might get vacant fast. So she is trying to angle it. Because whatever she says goes against truth, sir. Sir, in 2007, I'm talking 2017, she was in Tamil Nadu. After Mrs. Jayalalitha's death, she thought she can become the chief minister. She was angling for the chief minister's post. And that time she said, this year there will be no NEET. There will be NEET exemption for Tamil Nadu. All the students in Tamil Nadu believed her. Because only we know that whatever she says doesn't come true. So just to move people, she tried, but she never could become the chief minister of Tamil Nadu. Sir, similarly, as I said, she is angling for a bigger post now. We are wishing her all the best because she is from Tamil Nadu, sir. Sir, again, sir, we will answer the AIMS projects. AIMS Madurai remains incomplete. AIMS Madurai remains incomplete. Sir, again, the AIMS Madurai is the only AIMS project funded by JICA, whereas all other aims have been funded by the union government. Sir, Delhi and Meerut received thousands of crores for metro project, while Chennai struggles to secure funds for its only metro project in Chennai. Sir, that too, sir, our state government, our chief minister said, we don't need your funds. Because we got the funds from JICA, after which the union government came running, oh no, we'll fund you. Because the JICA funds have to come through the union government. So they had no choice but to compensate. Sir, the second largest economy in India is being sidelined by the NDA government. Sir, we will win. Our able administration of our chief minister, M.K. Stalin, has been so good. All the industries are coming to Tamil Nadu. Even 2 days back, he opened the largest solar panel factory, not by Ambani, in Tamil Nadu. Sir, every industries are coming to Tamil Nadu. Sir, we will continue to go. Whatever you try to do, the people of Tamil Nadu have so much of faith and trust in our chief minister. Sir, wait, I have time. You have got time, sir. I'm concluding. Let him finish, sir. He has got time, sir. There are 3-4 speakers. Sir, already he has taken. Wait, sir. Sir, don't speak in our time, sir. We have got time to speak. In fact, the efforts taken by a Dravidian model, we were earlier, before the DMK Dravidian model government, we were the 76nd position when it came to Kelo India. After our able leadership of our Deputy CM, Udayanidhi Stalin, we are in number 2 place in Kelo India. This is the success of the Dravidian model. Sir, I would like to ask one of our MPs, who's MP, sir, which is belonging to DMK party, had a recent issue with the bank. Sir, for not maintaining a minimum amount of 25,000 rupees, he was charged. Nearly 9,000 rupees was penalized. He wrote a letter. He did not say auto-debited. When he made a claim, sir, he wrote a letter. 9,000 rupees was refunded to the MP. Wow, but it's not more. We are upset. Because he's a member of parliament, he got his money. But sir, only the public sector banks alone have collected 8,500 crores for not maintaining minimum balance. Sir, is this the way to be done? I asked the finance minister. The banks are making enough money. They are taking our money and lending the money and making money. But will they ever refund or give us any money, penalty money, if when we go to the ATM and we try to withdraw money and there's no money in the ATMs, will the banks be penalized?
will the money be given to the person who was desperate to take money, sir? Nothing. Sir, there's one more last comment. There was, sir, Don't deal. sir, let me tell you, I'm talking about you. Sir, Please sir, kindly let me tell you, sir, kindly conclude. in a credit card, if you buy And a kindly flight ticket, adjust to the chair. sir, I'm the main speaker, please. Sir, we have got time, sir. Don't disturb us, sir. No, I am not disturbing. 29 minutes Use a allotted for credit your card party. for purchase of Already 29 minutes he tickets. has Sir, when you taken. purchase, I'm concluding. Sir, when you can use a credit card to purchase tickets in Air India or any other airline, sir, and you cancel it, it takes 5 to 14 days for refund. Sir, it takes 5 to 7 seconds for them to take the money away from my bank account. But it takes 5 to 10 days for refund. Sir, now Swiggy or Licious, sir, 1,000 rupees, 1,500 rupees, they give it in 20 minutes. They refund it. When you cancel the order, they refund in 20 minutes. Why is that? The big corporates like Tata's and others are taking away common man money and rotating. Is this the way we have to do it, sir? Sir, there's one more serious issue which I like to concern. Sir, this concerns you. Sir, we know what we are all called in the banking terminology, PEPs. We are all pepped up people. It doesn't mean a good thing. It is a bad thing. Our flag goes in the banking accounts. We are called politically exposed person. That means any transaction we do or come Your party time is over. 29 minutes. No, sir, we are more. 50 minutes. Let me complete. I'm concluding. Sir, I'm concluding. Last point, sir. Last point. Sir, last point. Sir, we are the lawmakers. Please, sir, please move. We are the lawmakers. We make laws. We pass the finance bill. But when it comes to banking industry, we are called politically exposed person. Our flag is raised. No loans are given to us. Sir, no credit cards are given to us. They come and tell us, don't take a credit card. Take a debit card. It's good for you. Sir, this should change. Why should the lawmakers be penalized? Sir, it's not only for you. It's not only Nishikant Dubey, it's not only you. It's your son, your daughter, your wife, your entire family are marked as politically exposed person. Thank you. Sir, I think this time has come when we have to ensure such discrimination has come. Concluding, sir. Conclusion, sir. This budget, concluding, sir. Last, sir. This budget only favors the corporates. This budget is anti-people. This budget is anti-Tamil Nadu, anti-Kerala, anti-Karnataka, anti-Adalgu. Against the Indian population, 98% of the population. And I feel that the finance minister should be more positive in making sure that budget is entirely for India. Thank you, sir. सभापति महोदय, आर्थिक और सामरिक दर्शन शास्त्र के दृष्टिकोण से 20वीं सदी के 5 बड़े विचार रहे। सबसे पहला, जब 1933 में अमेरिका में महामंदी आई तो तत्कालीन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उन्होंने एक नए डील की घोषणा की, इसे अंग्रेजी में न्यू डील कहते हैं। दूसरा बड़ा आर्थिक और सामरिक विचार था दूसरे महायुद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल प्लान की घोषणा। तीसरा जो बड़ा आर्थिक और सामरिक विचार था वो जापान के ऊपर जब एटॉमिक बम का प्रयोग किया गया और जापान पूरी तरह से तहस नहस हो गया तो उसके पुनर्निर्माण के लिए एक मैकआर्थर प्लान बना। उसी तरह से 1978 में जब डेंग शाओपिंग चीन के सर्वा नेता बने तो उन्होंने साम्यवाद की परिभाषा बदल दी। उन्होंने कहा कि इट इज ग्लोरियस टू बी रिच, कि अमीर बनना
एक बहुत प्रभावशाली बात है। और 78 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के तीसरे प्लेनम को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि इट डज नॉट मैटर वेदर अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस। फिर 1991 आया जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में वो देश के वित्त मंत्री थे। भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और वैश्वीकरण हुआ और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 10 वर्ष का जो एनडीए भाजपा का शासन रहा है उसका सिर्फ एक बड़ा विचार था और वो विचार का नाम था नोटबंदी या नोट बदली। और जितने उद्देश्य उस नोटबंदी के लिए लोगों के समक्ष रखे गए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हो सका। और आज 24 जनवरी 2025 को भारत की अर्थव्यवस्था में जो कैश इन सर्कुलेशन है वो 35.99 लाख करोड़ है। आपको याद होगा 16.99 लाख करोड़ डिमोनेटाइज किया गया था, लोगों को कतारों में खड़ा किया गया था, कई लोग उन कतारों में खड़े खड़े मर गए। और आज 8 साल बाद उसी अर्थव्यवस्था में जो कैश वो 35.99 लाख करोड़ है। ये इस सरकार की पिछले 10 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। अब मैं आता हूं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रिबेट पर। सभापति महोदय, आपको याद होगा, आप तो इसी सदन के सदस्य थे पिछली बारी। वर्ष 2019-20 में वित्त मंत्री कई छोटे छोटे बजट लेके आई थी, एक के बाद एक के बाद एक। और उसमें जो भारत के पूंजीपति थे उनको जो कॉर्पोरेट आयकर है उसमें बहुत बड़ी छूट दी गई थी। आयकर की दर घटाकर 22% और कई कंपनीज के लिए 15% कर दी गई थी। संसद की एस्टिमेट्स कमेटी का अनुमान है कि पहले 2 वर्ष में भारत के राजस्व का 1.84 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, घाटा हुआ था, वो कॉर्पोरेट टैक्स रिबेट की वजह से। पर जो अर्थव्यवस्था का चक्का है वो नहीं घूमा। उसके पीछे जो दर्शन विचार था वो ये था कि पूंजीपतियों को हम टैक्स रिलीफ देंगे, उससे वो निवेश करेंगे, निवेश करने के बाद जो अर्थव्यवस्था का चक्का है वो घूमेगा। पर वो चक्का नहीं घूमा। जो निजी निवेश है वो भारत की अर्थव्यवस्था में नहीं हुआ और इसके कारण जो सरकार है उसको पिछले 5 वर्ष से गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर से इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश करनी पड़ी। वित्तीय वर्ष 22-23 में 35% गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया 5.54 लाख करोड़ का। वर्ष 23 में 35% फिर बढ़ाया गया 7.5 लाख करोड़। वर्ष 24 में फिर बढ़ाया गया 37.4% 10 लाख करोड़। वर्ष 25 में 11.1% फिर बढ़ाया गया 11.11 लाख करोड़। और आपके वर्ष 26 में अनुमान है कि इसको 11.21 लाख करोड़ किया जाएगा। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य था पिछले वर्ष वो सिर्फ 92% पूरा हो सका, सिर्फ 10.18 लाख करोड़ रुपया लगा। इसलिए हर अर्थशास्त्री ने उस समय एक ही बात कही थी कि आप ये पूंजीपतियों को पैसा मत दीजिए,
आप भारत की जनता के जेब में पैसा डालिए, पर सरकार के कान के ऊपर जू नहीं रहेंगी। और 5 साल वो तजुर्बा विफल होने के बाद, पूरी तरह से धराशायी होने के बाद, इस बारी इन्होंने ऐलान किया कि हम जो आयकर दाता हैं उनको आयकर में रियायत देंगे। तो देर आए दुरुस्त आए। हमें उम्मीद है कि जो ये जो आयकर उपभोक्ता है उनको जो रियायत दी गई है, जो 5 साल से भारत की अर्थव्यवस्था का चक्का बिल्कुल पूरी तरह से जाम पड़ा था, वो दोबारा शायद चलना शुरू हो जाए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दूसरी तिमाही में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो सिर्फ 5.4% से बढ़ी थी, और तीसरी तिमाही के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए। अब मैं कुछ मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स पे आता हूं। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के अनुसार सभापति महोदय, जो वित्तीय घाटा था वर्ष 24-25 का, वो 15,59,527 करोड़ था। जो रिवाइज्ड एस्टिमेट हैं वर्ष 25-26 के, उसके अनुसार जो वित्तीय घाटा है वो 15,68,936 करोड़ रुपया है। इसका क्या मायना है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो वित्तीय घाटा है, वो सिर्फ 591 करोड़ रुपए से कम हुआ है। और जब आप इस वित्तीय घाटे को गवर्नमेंट के बोरोइंग्स के संदर्भ में देखते हैं तो वर्ष 24-25 के जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है उसके अनुसार सरकार ने 11,62,678 करोड़ रुपया मार्केट से ऋण उठाया था अपना खर्चा चलाने के लिए। वर्ष 2025-26 में ये जो ऋण सरकार उठाएगी, जिसे गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग्स कहते हैं अंग्रेजी में, वो 11,53,834 करोड़ रुपया होगा। कहने का तात्पर्य है कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है मार्केट से, वो सिर्फ 8,844 करोड़ रुपए से कम हुई है। अब एक बहुत बुनियादी सवाल उत्पन्न होता है। आपने आयकर दाताओं को तो आयकर में छूट दे दी, पर अगर सरकार मार्केट से इतना पैसा उठाएगी और खपत अगर बढ़ भी गई तो जो पूंजीपति हैं वो निवेश करने के लिए कहां से पैसा लेके आएंगे? क्योंकि आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को तो क्राउड इन कर दिया है। अगर सारा ही पैसा मार्केट से सरकार उठाएगी तो जो निजी निवेशक है उसके पास पैसा कहां से आएगा? और इस सवाल का आज तक सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आया है। अब मैं आगे आता हूं। टैक्सेस ऑन इनकम, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं 2024-25 के, उसमें यह कहा गया था कि सरकार के पास टैक्सेस ऑन इनकम 12,57,000 करोड़ रुपए आए हैं। जो बजट एस्टिमेट्स हैं 25-26 के, उसके हिसाब से ये जो टैक्सेस ऑफ इनकम है ये 14,38,000 करोड़ रुपए होंगे। आपने 1 लाख करोड़ की तो रिवायतें दे दी क्योंकि आपको लगता था कि उससे चुनावी फायदा होगा। अब मुझे एक बात बताइए सभापति महोदय, और आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वित्त मंत्री यहां पे नहीं है, कि ये जो 1,81,000 करोड़ रुपया है, वित्त राज्य मंत्री जी हैं और आपकी बात को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा है सभापति महोदय, इस सदन की परंपरा रही है, जब बजट का डिबेट होता है तो वित्त मंत्री सदन में बैठते हैं। मैं जितने साल इस सदन का सदस्य रहा हूं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि वित्त मंत्री आपके सदन में मौजूद ना हो जब बजट के ऊपर डिस्कशन हो रहा हो। तो आप
आप दोबारा स्पष्टीकरण मत दीजिए कि वित्त राज्य मंत्री बैठे हैं, मैं भी उनको जानता हूं, मैंने देखा है उनको बैठे हुए, पर ये सदन की परंपरा के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। वो राज्यसभा ये गलत है राज्यसभा में। अच्छा, मैं आगे चलता हूं। अब मुझे आप एक बात बताइए निशिकांत जी, आप बैठे रहिए। श्रीमंत मानवीय जी, आई एम नॉट यील्डिंग, प्लीज सिट डाउन। आई एम नॉट यील्डिंग। चलिए आप कर लिया। तो सभापति महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि 1 लाख करोड़ रुपया, अरे निशिकांत जी चुप करके बैठिए, 1 लाख करोड़ रुपए की आपने रिवायत दे दी। अब मुझे आप एक बात बताइए कि 1,81,000 करोड़ रुपए, आई एम नॉट यील्डिंग, सभापति महोदय, मुझे एक बात बताइए कि 1,81,000 करोड़ रुपया जो आपने अनुमानित किया है कि टैक्सेस ऑन इनकम बढ़ेंगे, वो कहां से आएगा? सभापति महोदय इधर देखिए, सभापति महोदय इधर देखिए, उनको बिठाइए। एक मिनट, नहीं, नियमों में व्यवस्था प्रश्न मांगा है। मैं चेयर दे रहा हूँ। ऑन व्हाट ग्राउंड? आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक मिनट बैठ जाए, एक मिनट। हाँ बताइए। आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो सभी चीज का जिम्मेवार है। बार बार ये अपोजिशन हमारे वित्त मंत्री के ऊपर जो क्वेश्चन उठा रहा है, वो खुद वकील है, वो गलत बयानी कर रहे हैं सर। उनको कहिए कि इस तरह की बातें नहीं कहें। सभापति महोदय, शायद हमारे मित्र निशिकांत दुबे जी इस बात को तो मानेंगे कि मैंने संविधान शायद थोड़ा सा उनसे ज्यादा पढ़ा हुआ है। मैंने परंपरा की बात की थी, मैंने संविधान की बात नहीं की थी। तो मैं आपसे ये आपके समक्ष ये बात रख रहा था कि वित्तीय वर्ष 24-25 में सरकार ये कहती है कि उनके पास जो राजस्व आया, टैक्सेस और इनकम, 12,57,000 करोड़ रुपया आया। उनका अनुमान है कि 25-26 में ये 14,38,000 करोड़ रुपया आएगा। आपने 1 लाख करोड़ रुपए की तो करदाताओं को रियायत। अब मुझे आप एक बात बताइए, और मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, ये 1,81,000 करोड़ रुपया कहां से आएगा? इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इसका कोई अनुमोदन नहीं है बजट में कि 1,81,000 करोड़ रुपया कहां से आएगा। अब मैं वित्तीय घाटे पे आता हूं। सरकार ने बहुत ही चतुराई से, बहुत ही अद्भुत तरीके से इस बारी में जो फिस्कल डेफिसिट के वित्तीय घाटे के मापदंड है वो बदल दिए। एब्सोल्यूट फिस्कल टारगेट से इन्होंने डेट टू जीडीपी रेशो पे आ गए। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 31 मार्च 2014 को इस भारत सरकार के ऊपर 55,87,149.33 करोड़ रुपए का कर्जा था। 31 मार्च 2026 को वो कर्जा बढ़कर 196,78,772.62 करोड़ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि पिछले 10 साल में इन्होंने 140,91,623.33 करोड़ रुपए का कर्जा भारत के सर के ऊपर लाद दिया है। वो कर्जा कौन चुकता करेगा? जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियों के ऊपर you have created an intergenerational debt by putting this burden on the coming generations that they will have to service the debt which is being created by this government. 200 लाख करोड़ रुपया या 196 लाख करोड़ रुपया कम कर्जा नहीं होता। अब मैं कृषि पे आ जाता हूं। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये सरकार ने कहा कि 2017 से 22 तक, मेरे को आप 2-3 मिनट और देंगे और मैं कंक्लूड करूंगा। 2017 से 22 तक भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो 5% से बढ़ा। 22-23 में उसकी वृद्धि दर गिर के 1.4% हो गई। पर आप विडंबना देखिए, आप विरोधाभास देखिए कि मनरेगा का बजट 2013-14 में 33,000 करोड़ था, 25-26 में 86,000 करोड़ हो गया। मनरेगा के परसेंटेज
2013-14 में 220.22 करोड़ परसेंटेज थे और 2023-24 में बढ़कर ये 3.8 करोड़ परसेंटेज हो गए। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर भारत का कृषि क्षेत्र 5% से बढ़ रहा था तो फिर ये मनरेगा बजट तिगुना कैसे हो गया? मनरेगा के परसेंटेज दुगने कैसे हो गए? इसका यह मतलब है कि भारत के कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संकट है, जिसके कारण लोग मिनिमम वेज, जिसे डीसी रेट कहते हैं, उस डीसी रेट के ऊपर काम करने के लिए तैयार है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि जो सरकार के आंकड़े हैं वो सरकार के आंकड़े सही नहीं है। मैं अपनी पेनल्टीमेट बात यह कहता हूं, किसी भी अर्थव्यवस्था के 5 मूलभूत आधार होते हैं: बचत, खपत, निवेश, उत्पादन और रोजगार। अब मैं आपको एक तुलनात्मक आंकड़े देता हूं। जो सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो है 2013-14 में 34% था, जब ये पॉलिसी पैरालिसिस की बात करते थे कि यूपीए सरकार को लकवा मार गया। 2023-24 में कितना है? 31%। जो प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 2011-12 की प्राइसेस में 2-3 मिनट और लूंगा, 2013-14 में ये 60% था। 2024-25 में जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स है वो 56.3% है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 2013-14 में 33.8% था, 2023-24 में गिरकर 29.6% रह गया है। शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी, सरकार ने कहा था कि 25% जीडीपी में उत्पादन का शेयर होगा 2022 तक। 2023-24 में वो जो शेयर है वो मात्र 15.8% है। और बेरोजगारी की दर, सभापति महोदय तो थोड़ा सा समय दीजिए क्योंकि आंकड़े जरूरी है, 2014 में 5.44% थी, 2024 में ये एवरेज 8 या 9% है ऑन एन एवरेज। मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि इस बजट में आम आदमी तो पूरी तरह से पिस गया। 803 रुपए का गैस का सिलेंडर, 94 रुपए 70 पैसे लीटर पेट्रोल, 87 रुपए 67 पैसे डीजल, 165 रुपए का सरसों का तेल, 55 रुपए किलो आटा, 60 रुपए लीटर दूध और रुपया जो कहते थे कि प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा रुपया बढ़ रहा है। जब यूपीए की सरकार थी 26 मई 2014 को 58 रुपए 58 पैसे का डॉलर था। 7 फरवरी 2025 को यह डॉलर 87 रुपए और 47 पैसे का है। और मैं कोई प्रधानमंत्री जी की उम्र के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरी आखिरी बात सुन लीजिए, मेरी आखिरी बात सुन लीजिए सभापति महोदय जी। There was one big idea, और मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, there was one big idea in the economic survey, and that one big idea was that the chief economic advisor told the government that they need to get out of the way of the people. They need to change the manner in which they govern the country, and they need to re-engineer it from you are innocent until proven guilty, rather than what they have been doing in the past 10 years कि आप गुनहगार हो जब तक आप अपना गुनाह साबित नहीं कर सकते। और वो बड़ा ख्याल इस बजट में बिल्कुल पूरी तरह से धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने बोलने का अवसर भी दिया। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और ये मुमकिन करके दिखाया। इसका सबसे बड़ा सबूत ये बजट है, क्योंकि ये सिर्फ एक वार्षिक बजट नहीं, ये विकसित भारत का रोड मैप है और संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का रास्ता है। लेकिन माननीय सभापति जी, जैसे ही हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं, विपक्ष के पेट में मरोड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं। और यही नहीं,
ये दर्द थोड़ा इससे भी ज्यादा दिखेगा। जावेद साहब सुनिए, पिछले कल ही नतीजे आए हैं सुनिए सुनिए। और दिल्ली के चुनाव के नतीजों ने बताया कि दिल्ली वालों ने आपदा मुक्त दिल्ली कर दी है और ये कह दिया कि केवल नारा नहीं है, दिल्ली के दिल में मोदी है, ये करके दिखाया है। और दिल्ली वालों ने आपदा की लूट की खुली छूट, जो लूट और भ्रष्टाचार चारों ओर फैला था, आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। दिल्ली में कमल का फूल खिलाया है सर। महान जनता ने, दिल्ली की महान जनता ने 10 साल के कुशासन और प्रदूषण को बाहर का रास्ता दिखाया। दिल्ली की जनता ने मोदी जी के विकास का मार्ग चुना है। आज मैं ये कह सकता हूं, आज अंधेरा छटा है, आपदा का बादल फटा है, दिल्ली के सौभाग्य का सूर्योदय हुआ है, क्योंकि दिल्ली में कमल खिला है, दिल्ली में कमल खिला है। यही नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब माता लक्ष्मी आपके ललाट पर आपका तिलक करने आए तो मुंह धोने ना चले जाएं, फटाफट अपना तिलक कराएं। और इसी तरह का अवसर किसी को गंवाना नहीं चाहिए। ऐसा ही मोदी सरकार ने अवसर दिया, जहां मां लक्ष्मी आप सबके द्वार आई है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो आज तक संभव नहीं हुआ। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि 12 लाख तक जीरो टैक्स कर दिया है। और मैं विपक्ष के मित्रों से कहना चाहता हूं, अब तो थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, पूरा देश खुश है भाई, आपको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं आगे बताऊंगा इंदिरा जी के समय क्या क्या होता था। आज भारत के 4 ग्रोथ इंजन तय हुए हैं, एग्रीकल्चर हो, एमएसएमई हो, इन्वेस्टमेंट हो या एक्सपोर्ट हो। और हमने जो विकसित भारत के लिए लक्ष्य तय किए हैं माननीय सभापति जी, वो भी सन 2047 तक शून्य गरीबी होगी, गरीबों को गरीबी से मुक्ति मिलेगी। वहीं पर 100% गुणात्मक शिक्षा दी जाएगी, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा और सस्ते दाम पर दी जाएगी। और वहीं पर श्रमिकों का कौशल विकास होगा और उचित उनको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। हमारे विकास की भागीदारी में महिलाओं को 70% उनका योगदान इकोनॉमिक एक्टिविटीज में होगा। और हमारे किसानों के दम एग्रीकल्चर 17,395 करोड़ से बढ़कर किसानों के लिए 1,37,757 करोड़ हो गया। शिक्षा का बजट भी 71,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,28,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। और अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं 27,000 करोड़ से बढ़ाकर आज लगभग 99,900 करोड़ हो गया। अनुप्रिया जी यहाँ पर बैठी हैं, एमओएस हेल्थ। और मैं यही नहीं, आपको कुछ आंकड़े और भी रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले 1-2 बातें मैं और करूंगा। जहां एक और गरीबों के उत्थान के लिए हमने काम किया है, वहीं पर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 2047 तक 100 गीगावाट हमारी कैपेसिटी हो, तो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी प्राप्त करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के निर्माण के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। और सन 2033 तक हमारे 5 इंडिजिनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनकर तैयार हो जाएंगे। यही नहीं सर, विपक्ष के कुछ नेताओं ने और विशेष तौर पर राहुल गांधी जी ने कहा कि उनको कुछ दिखता नहीं है। सर, ना उनको युवा दिखते हैं, ना युवाओं की उद्यमिता दिखती है। और मैं यही नहीं, ये लोग आइवरी टावर में रहते हैं, जहां खड़े वहीं के वहीं खड़े हैं, इनकी एक अलग अपनी दुनिया है साहब। ये ठहरे हुए पानी की तरह हैं, जिनको सड़ना मंजूर है लेकिन प्रवाहित होना मंजूर नहीं है। हमने तो मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी आंकड़े बताए कि 2014 में भारत कहाँ था और आज 2025 में भारत कहाँ है। यही नहीं, हमारे युवाओं के पास नए आइडियाज हैं, इनोवेशन है, रेजोल्यूशन है, सॉल्यूशन है। लेकिन मैं एक सवाल इनसे पूछता हूं, 2014 से पहले स्टार्टअप कहां था? मोदी जी को युवाओं पर विश्वास था तो स्टार्टअप इंडिया लेकर आए। आज जितने कांग्रेस के सांसदों की आंकड़ा नहीं है ना,
उससे ज्यादा भारत के यूनिकॉर्न का आंकड़ा 117 यूनिकॉर्न आज भारत में है। लेकिन कांग्रेस तो एक ही को स्टार्टअप करने में लगी रही। साहब कितनी बार लॉन्च किया, ऐसा स्टार्टअप था कि वो पास ही नहीं हो पाया, बार बार फेल हो गया। और यही नहीं, अब तो हमारा प्रयास है, जहां एक और 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स बन गई, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी के लिए जहां 5 लाख महिलाओं को, SC ST को अब 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देने का काम मोदी सरकार करेगी। एक बहुत बड़ा कदम। इससे पहले मुद्रा योजना हो, स्वनिधि हो या इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हो, इन सब के माध्यम से बैंकों ने शानदार काम किया। लेकिन यूपीए के समय पॉलिसी पैरालिसिस तो थी, साथ में फोन बैंकिंग भी थी, क्योंकि मनीष जी ने अभी कहा कि पॉलिसी पैरालिसिस इनके समय था, फोन बैंकिंग भी थी। 12 में से 11 बैंक घाटे में थे, PCA फ्रेमवर्क में थे। हम 4R लेकर आए और हमने बैंकों को सुधार किया। आज 12 के 12 बैंक मुनाफे में हैं। अकेला SBI 66,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहा सर, 66,000 करोड़ का। यही नहीं सर, अगर आप देखिए, हम सर, मुझे 4-5 मिनट में खत्म कर दूंगा सर। इफ टुडे वी हैव टू से, वी कैन से कांग्रेस इज एंटी बिजनेस, एंटी एंटरप्रेन्योर एंड एंटी यूथ पार्टी। सर मैं एक आपके माध्यम से देश समाज के सामने, संसद सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं। AI की बात की गई, क्या AI केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है? मोदी ने कहा हम तो एस्पिरेशनल इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन AI एक एंटी इंडिया सोच के लिए भी है सर। वो लोग जो सेंसेक्स के गिरने पर सेलिब्रेट करते हैं, झूमते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, जो भारत के नुकसान करने की बार बार कोशिशें करते हैं, जो भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, क्या आपको लगता है देश के लोग कभी उनके साथ खड़े होंगे? ये AI जो है ना, एंटी इंडिया वाले, इनके साथ कभी कोई खड़ा नहीं होगा। और सर एक गठबंधन भी बड़ा था, वो कहते हैं ना, 7 फेरे भी लेने हो तो सत्यता, समर्पण और प्रेम ना हो तो वो 7 जन्म का 7 भी नहीं चलता, 7 महीने भी नहीं चलता। और यही इंडी गठबंधन के साथ वो आज तार तार होता नजर आ रहा है। आज छोटे छोटे दल भी कांग्रेस को कहते हैं कि इनका नेतृत्व हमें नहीं चाहिए। यही नहीं सर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए मैंने पहले भी कहा था कि नेता प्रतिपक्ष का पद जिम्मेदारी और ईमानदारी का है। लेकिन इनसे जिम्मेदारी और ईमानदारी की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे किसी बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए बोल दो सर। और यही नहीं सर, हमने सेमीकंडक्टर को लेकर आए, बड़ी बड़ी हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई। एस्पिरेशनल इंडिया को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आगे लेकर आएंगे। सर मैं 2 मिनट में बस खत्म कर रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मोदी जी भारत के सशक्तिकरण के लिए करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के एक नेता इसको विभक्तिकरण के लिए करना चाहते, क्योंकि वो AI का उपयोग कास्ट सेंसस के लिए करना चाहते हैं, जो आज भी जात पात से बाहर ना आना चाहते हो। अभी एक सांसद ने भाषण दिया, उन्होंने केवल एक क्षेत्र की बात करके छोड़ दी सर। आज भी क्षेत्रवाद, जातवाद के नाम पर अगर विपक्ष देश को बांटने का प्रयास करेगा, और कांग्रेस के एक सांसद ने पिछले सत्र में भी, पिछले जो हमारा सदन था उसमें भी कहा था कि दक्षिण भारत के लिए कर दीजिए। वहां की जनता ने भी उसको वापस चुनकर नहीं भेजा, क्योंकि देश एक रहना जानता है और मोदी जी के नेतृत्व में एक रह के आगे बढ़ना चाहता है। मैं राहुल गांधी जी ने कहा कि देश के फिस्कल डेफिसिट की बात की। मैं ये कहूंगा राहुल जी, आप फिस्कल डेफिसिट से ज्यादा अपने पॉलिटिकल डेफिसिट की चिंता कीजिए। फिस्कल डेफिसिट की चिंता मोदी जी कर लेंगे, दूसरे का मुझे पता नहीं। और यही नहीं सर, आज जो दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ राहुल जी इल्लू इल्लू कर रहे थे ना, वो 70 में से 67 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई, खाता खुल नहीं पाया। और मैंने पहले भी कहा था, डबल डेटिंग करने वालों का हाल वो आज यहाँ पे नजर आ गया है। और राहुल गांधी जी के आइडियाज और विपक्ष के आइडिया को विपक्ष ने देश ने माना नहीं। सर ये आखिरी 2 लाइनें कह के मैं खत्म कर रहा हूं सर, क्योंकि सर मैं इतना ही कहूंगा, उन्होंने आंकड़े दिए हैं ना, आज देश और दुनिया में
सर एक बहुत बड़ा आयोजन चल रहा है, वो है दिव्य और भव्य महाकुंभ का। भक्ति, अध्यात्म और सामाजिक समरसता से ओत प्रोत भारत का दर्शन करने का इससे अवसर मिलता है। सर मुझे भी परसों जाने का अवसर मिला, मैंने भी कुंभ में स्नान किया। मैं इस अलौकिक आनंद का वर्णन नहीं कर सकता। वैसे वहाँ के माहौल के बारे में एक बात जरूर मैं कर सकता हूँ कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। धन्यवाद। कहने के लिए सर प्रयागराज में कुछ लोग कहते हैं कि उनके पुरखों ने, जैसे मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू जी ने कुंभ में स्नान किया था, लेकिन आज की पीढ़ी जाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जाते तो अवसर मिल जाता स्नान करने का भी, भारत के दर्शन करने का भी, दादाजी की समाधि पे फूल चढ़ाने का भी। और यही नहीं, हाँ हो सकता है सर अंकल सोरोस और अंकल सैम ने मना किया हो, कृपया समाप्त और फतवा जारी कर दिया हो कि ना कोई रामलला के दर्शन करने जाएगा, ना कोई कुंभ स्नान करने जाएगा। सर ये वही है जो दिल्ली के चुनाव में जिनके। कृपया समाप्त करें। सर डोंट कट माय टाइम सर। कृपया समाप्त कर दिए। सर मैं बजट समाप्त कर दें। सर मैं समाप्ति कर रहा हूं। सर मैं इतना ही कहूंगा, काफी बात आपकी। सर ये लास्ट लाइन कह के कर रहा हूं कि जहां हम भारत की क्षमताओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर जब हमने बिहार के बारे में बात की कि मखाना बोर्ड वहां पे बनाएंगे, तो जो लोग वहां जाके दूसरों के साथ मटन बनाने का काम करते थे, मखाना बोर्ड पर उनके चेहरे मुरझा गए। ऐसा क्यों है सर? सर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हमने बिहार के लिए, तो उसका विरोध करना शुरू कर दिया। कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की बात की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की बात की, तो उस पर भी सर मैं ये कहूंगा कि मोदी सरकार का ये बजट जो है वो विकसित भारत बनाने के लिए है। वो उसी दिशा में आगे बढ़कर है और पूरे देश ने मोदी जी के इस बजट का स्वागत किया है। आपने मुझे बोलने सर thank you sir for allowing me to speak on union budget. Let him conclude sir. आपकी लास्ट लाइन तो हो गई कई बार। सर लास्ट लाइन है सर, ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट बचत बढ़ाएगा, निवेश बढ़ाएगा, खपत बढ़ाएगा और विकास को भी तेजी से बढ़ाएगा। देश की नागरिकों की जेब में, उनके बैंक अकाउंट में पैसा बचाएगा और ये नागरिक मिलकर सब विकसित भारत का जवाब दे दिया। Thank you sir for giving me opportunity to speak on the union budget sir. So what a change we are seeing in within 8 months sir. Last time when we had a budget, a lot of people were talking about coalition won't work, NDA won't work, but now we are seeing India alliance crumbling and they are fighting elections amongst themselves. And it's a good change to see, sir, in 8 months. And also, it's refreshing to see in this session, there is no external influence, at least. There's no Soros, there's no Heidenberg, there's no Pegasus. At least the narrative is being set here, sir. And I want to start off by congratulating our finance minister, sir. It's her 8th budget in a row. It's no mean feat, sir. And India is still one of the fastest growing major economy, sir. We should remember that. And we have achieved 4.7 fiscal deficit, sir, and we are aiming for 4.4 fiscal deficit in the next 1 year or so, sir. And our debt to GDP ratio is also 57% of the GDP, sir. When compared to any major economy, USA has 123%, sir, and France has 109%, and Germany has 62%. We are doing very well in this field, sir. And India is still doing very well in banking, sir, and we have least number of NPS in the Indian banking sector, sir. So we should remember this, and we should congratulate Finance Minister, sir. And also, I want to thank the Finance Minister on behalf of middle class and taxpayers who are being given opportunity, given a chance that they don't have to pay any income tax up to the income of 12 lakhs, sir. And second reason I want to thank her is for the PLA scheme, which has been enhanced from 9,300 crores to 19,482 crores. So it's almost a jump of 110%. That PLA scheme has been enhanced, sir. There's a lot of comments that are coming from the opposition side saying PLA scheme has been used only for the, not for the manufacturing, but for the only assembly. So I've seen in my own state where PLA scheme has been taken by food processing industries, and they're doing fantastically well for the last 2 to 3 years, sir. And they spoke so much about the iPhones.
iPhones being the assembly only is happening in India, but not the manufacturing is happening. But if you go by the data, when the PLI scheme was announced for the iPhones, just 4% Indianization that has happened. But now, as of now, this 30% Indianization has happened right now. So it takes time. It's growing, and industries are developing around the iPhone manufacturing. So if my numbers are wrong, please correct me. And also, I want to thank FM on behalf of Andhra Pradesh, sir, because she has considerably allocated 15,000 crores for the development of Amaravati, which is our state capital, sir, which was lying stagnant for 5 years from 2019 to 2024, sir. She has given a lease of life to the Amaravati capital, sir. And also there's 12,000 crores that have been sanctioned for Polavaram irrigation projects, sir. It is a lifeline of Andhra Pradesh. Millions of acres can be irrigated, millions of homes can be given drinking water, sir. I thank her for that. And also there's a 11,000 crores sanction that has been given for the restructuring of steel plant at Visakhapatnam, sir. This is the pride of Andhra Pradesh, and the respect that is shown by Finance Minister and people of Andhra Pradesh, we are really adamant to that, sir. And also there is a 4,300 crores that has been given for Kopparthi and Orvakallu industrial corridor, sir. This will create a lot of employment. This will bring in a lot of investment into this Rayalaseema, which is a backward area, sir. And also I want to thank the Railway Minister also, sir, for laying foundation for the Visakhapatnam railway zone as well, sir. And on behalf of the industries from Andhra Pradesh, I want to thank her for reducing BCD on the frozen fish from 30% to 5%, and removing BCD on crushed leather, and also removing BCD on the 36 life-saving medicines, either cancer or non-cancerous, sir. Thank her for that. And also on behalf of all people of Andhra Pradesh, thank you. We needed this encouragement. We needed this drive, push from the union government so that Andhra Pradesh can develop, sir. Because I have the report with me, sir. This is a report given by the NITI Aayog. This is not given by me. This is not the numbers given by me, or this is not something given by any political party, sir. This is done by a NITI Aayog report, sir. It describes the fiscal health of Andhra Pradesh until 2023, sir. Report has come out in 2025, but the health is monitored until 2023, sir. And as per that, out of 18 large states, Andhra Pradesh is lying at 17, sir, number 17. So the last but one, sir. And also our revenue growth has come down from 17% in 2018-19 to 9.8% in 22-23, sir. And public debt has increased at an average rate of 16.5% during the period of 2018-19 to 22-23, sir. There's almost 16.5% increase, sir. And also from 2014 to 19, this is really awful figures, sir, from 2014 to 19, wherein when we took 100 rupees as when we borrowed 100 rupees, we spent almost 59 rupees on capex, sir. But from 2019 to 24, when we took 100 rupees, when we borrowed this 100 rupees, we only spent 22 rupees on capex, sir. This has really stagnated all the infrastructure projects in Andhra Pradesh, sir. Sir, our Chief Minister has been talking about it, and results in Andhra Pradesh have very clearly shown, sir, that for any leader, without creating any wealth, we cannot do welfareism. So I know when I talk about it, they'll definitely cut this video and say, oh, Krishna spoke against the welfareism, but we are in favor of welfareism, but we want welfareism to be done after wealth creation. So as we are doing a debate across the nation, even in the Delhi elections, they have shown welfareism and development has to go together. So as the debate is going on with regards to one nation, one election, we want the debate to happen even on this, sir. Our Chief Minister now is clearly saying, let's have a debate across the nation saying no one has a right to do the welfareism without creating the wealth, sir. So I hope this Finance Minister will take it up, sir. Coming to the departments, with regards to the railways, there is an increase of 9,400 crores, sir. Thank you to the Railway Minister, but we request the railway lines which are being stagnant because of
land acquisition issues to be speeded up and completed, sir. There's a allocation of, for Narega, there's allocation of 86,000 crores that has been allocated. I know this is a demand-driven. I'm sure you'll bring more funds to this in the supplementary demand for grants. Only request from Andhra Pradesh is to include handloom weavers and handicrafts in this. So they are saving this field, sir, for so many years. It's a family tradition that they're doing. So I hope this can be taken into consideration, sir. Coming to agriculture, there's almost 3.994% increase in allocations, sir. And most heartening to see thing is, sir, every alternate cabinet meeting, you follow, everyone follows that, sir. Every alternate cabinet meeting, there is something that is being discussed and something that is being decision made regarding the agriculture, sir. So this is a good thing to see, sir. But recently, I was sitting with a few of the farmers from my constituency, and one of them is a very, he reads very well, he remembers very well. So he has asked me 3 pertinent questions, sir. The first question being, sir, I have seen central government employees getting 6th pay commission, 7th pay commission, and 8th pay commission. But I am getting this PM Kisan of 6,000 rupees from 2018. Sir, when they are getting this 8th pay commission, 7th pay commission, salaries are getting increased. Why can't my 6,000 rupees can be increased, sir? So in his own words, if I can change it, he's asking to be asking PM Kisan to be indexed with the inflation, sir. Second one he has asked was whether tenant farmers can be brought into this net of PM Kisan. We have enough technology, enough men to actually get the farmers on board, sir. So if the tenant farmers can be onboarded on PM Kisan, that will be a huge favor, sir. Third one and most important one is procurement of various food products, sir. There's some products that have been procured, but most of the products are not being procured. So say, for example, in my district, there's a chili production that chili cultivation that has happened, sir. But the problem is that is not in the procurement list. So the request from our farmers' side is, can you include, they won't ask every year, but maybe it happens once every 10 years, once every 8 years, sir. So when the prices really go down, we should have some sort of a mechanism, some sort of a special fund so that the central government and as well state government can intervene and stabilize the prices, sir. So this is the third ask from the farmers, sir. And the other clarity I need is with regards to Fiscal Bima Yojana. In 2024-25, there's 15,000 crores has been allocated, but 25-26 it has come down to 12,000, sir. So I request for a clarity whether this budget will be increased in the supplementary demand for grants or some sort of a mechanism has been in place for this, sir. And also coming to education, Jal Shakti and housing. There's a huge increments in the budget, sir, some of them, but the problem with all these 3 ministries is, sir, there's a underutilization of one. In education, there's 5% underutilization, Jal Shakti 47%, housing 22%. I'm sure the reasons being most of the states which are ruled by opposition are not coming forward and actually accessing these funds. Maybe because of that, because you apply for PM Shri boss, then you'll get it. You're not applying for PM Shri school, that's the problem. Kindly address to the chair. We have avenues, sir. Respond on his question. Coming from the state of Andhra Pradesh, we have a lot of avenues wherein these funds can be utilized properly. For example, education, a lot of higher education institutions have been sanctioned for us. Most of them are running in temporary campuses. We like ISER and IIIT. So we request funding to be done so that this underutilization won't happen in education, sir. And also PM Shri schools, we recommended for 369, only 855 has been selected, sir. We request other schools also to be selected. And coming to the STARS program, there's only 6 states that have been selected. I don't know why, state like Kerala has been selected. They're doing fantastically well so many years in the school education, but Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Orissa and Kerala, the 6 states have been selected. We request Andhra to be included in it, sir, because as per the ASER results that have been announced recently, the worst performing state because of the last 5 years of misgovernance in the education system is Andhra Pradesh. So we request even our education minister recently, when Nara Lokesh has come to Delhi, he's also requested for us. So we request Andhra to be included in the STARS program. And coming to the Jal Shakti, sir, there's a river linking project that we are asking for it, sir, for the Godavari to Penna. If that can be sanctioned from the central government, this underutilization won't happen, sir. And coming to the housing and urban, again, we have asked for the metros at Visakhapatnam and Vijayawada. This is under the AP Reorganization Act. If this can be sanctioned, this underutilization won't happen, sir. So I conclude with just 3 requests from our side, sir. Just give me 2 minutes, sir. The first request
it's not just related to Andhra Pradesh, it's related to the whole country. The first request is, sir, there are large businesses that are consolidating, like steel, cement, they come down from 10 groups to 3 groups or 4 groups, sir. And also there's a PLI scheme that has been given to the various sectors. They are also doing fine. But the problem of the main contention is with regards to the SMEs, sir. The SMEs, who are the growth engines, who create a lot of employment, they are facing huge issues with regards to high logistics costs, access to technology and time dependence. Just give me 2 minutes, I'll conclude, sir. But what they're requesting is, one thing they're requesting is, they're asking for risk capital to be there, sir. What do you mean by risk capital? They are normally, when they have to raise money so that they can improve their balance sheet, they can get the new technology, and they can make sure that they can produce better and compete with the others in the world level. They have to go through the banks, sir. The banks, they ask for 150% security, 200% security, sir. So what we request, it's helpful for everyone in SME, sir. What I request is, sir, in the last 2 years, there are almost, in 2022, 109 SMEs have gone for IPO, sir. In 2024, there are 235 SMEs that have gone to IPO, sir. And I know from my state, from erstwhile state where Hyderabad was the capital, there was hundreds of defense industries that were there, which are turnover of 50 to 100 crores. They can double it, they can triple it. All they need is this risk capital to be there, sir. They all benefited. I remember they all benefited when there was a stock exchange that was functioning in Hyderabad, sir. When we have arbitration centers across the country, when we have regional banks happening across the country, why can't we have stock exchanges, especially for SMEs, at least in the major cities, sir? This is a request. Last one, sir. I conclude, sir. I conclude with the last 1 point, sir. With regards to basic customs duty that has been reduced on automobiles, electronics, there are almost 51 products that BCD has been reduced, sir. But out of 51 products, there are 37 products. There's a cess that has been laid, sir. Finance Minister has mentioned many times that in the budget also, sir, that we will work in partnership with the states. So let's work together so that... Kindly conclude. Sir, last 1 minute, sir. Last 1 minute, sir. Last one. So the request from our side, sir, that this cess that is being collected, let's work out some formula so that state and center can benefit from it, sir. So this can be given both to the state and center, sir. So I conclude, sir. I conclude with just the last point, sir. With regards to funding the new technology, the opposition members have mentioned that we have rode the wave, that we have we have done really well with regards to the information technology. But I think we only rode half the wave, because when you look at the TCS and Infosys, they have done exceedingly well in service sector, sir. But the problem was that if you look at what are the products that have developed in the last 20 years or 25 years from India, at least from the IT sector side, there's none we can mention, sir, which have taken over the world. Sir, at least in this in the new next Industry 4.0, where is AI, robotics, renewable energy, and new age mobility, we should not be left behind. We should not be a service destination, sir. We should be there to be a technology provider, sir. So I request, under the National Research Foundation, 50,000 crores was announced 4 years back, sir. Somehow that money has not been trickled down. This year also there's 20,000 crores that have been given in the budget, sir. I hope that money will trickle down so that new technology can be taken forward, sir. Conclude, sir. Sir, I made all these requests with a positive impatience, sir. I'm impatient because the Prime Minister other day has mentioned in the address to the President's speech, saying these are the yojanas that he has bought in, and these are the amount of money it has saved the country. But even then, he has mentioned that he is impatient, that country should develop much faster, sir. With that message, I am also making this suggestion, sir. I want the country to move forward, and I want the Viksit Bharat to happen not in 2047, sir, much before that, sir. Thank you very much. Srimati Supriya Sule. Please. Sir, I stand on behalf of the NCP-SP to speak against the budget, sir. My dear friend Anurag Thakur ji spoke extensively. बहुत अच्छा लंबा चौड़ा भाषण किए उन्होंने. और एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स, एमएसएमई और इन्वेस्टमेंट्स पे काफ़ी विशेष टिप्पणी उन्होंने की. पता नहीं उनको डेटा कौन भेज रहा है, लेकिन I would like to share some serious hard data with him. Sir, this entire budget and the debt in this country is increasingly daily. आज जो यहाँ सब बैठे ना सर, हर के
सर के ऊपर आज कर्जा है, जिसके बारे में दयानिधि मारन जी बोल चुके हैं. मैं और डेटा उसके बारे में ज़रूर आगे बोलूँगी. I just want to share some details, but I'd like to start my speech with congratulating the Honourable Finance Minister for her 8th budget. And we had a lot of hopes because this was her first budget after the victory of the election. Because first last year दो किए हमने election के पहले और बाद, but this was one full budget. So we had a lot of expectations from her. But we were clearly disappointed, and I'll put it out in data. I'm not criticizing as an opponent, but as a well-wisher of Viksit Bharat. As per the advance estimates of the GDP, the projection has already declined. Sir, if you remember, आपको याद होगा सर कि पहले अपना जो GDP growth rate था वो 8.2% था सर, जो आज 6.4% पे आ चुका है. रुपये के बारे में मनीष तिवारी जी भी बहुत बोले. I just like to correct that. Today the price of the rupee is 87.87 today. आज की बात कर रही हूँ. And my very concern is a typical answer will come from this government कि देश में हर देश में ये हो रहा है. Let me correct this government. I am just preempting their explanation that this happened 1 month ago globally after the change in America's dispensation and government. But today Britain has recovered from it, the dollar, and the Britain pound has improved against the $1. Singapore has strengthened by 1.0% to the dollar, US dollar to Singapore dollar, and the euro also has strengthened. So the euro has strengthened, the Singapore dollar has strengthened, and so I'm only giving 3 examples. The Britain pound has done. But India has gone further down. मैं सिर्फ यहाँ किसी पे विशेष टिप्पणी करनी नहीं. I'm just putting a reality check to you that the rupee, if other countries have recovered, don't give me an argument that this is a global phenomenon, because it is not a global phenomenon. Daily this is going down. So I would want to ask them, why is this happening? आज निशिकांत जी भी काफ़ी US aid पे बोले. I really want to have a very serious discussion. जो political point वो करे, good luck to him. What I mean, in a democracy, healthy democracy, होना भी चाहिए थोड़ी नोक-झोंक. But I want to ask this government, the Honourable Prime Minister has gone to America today. He's India's Prime Minister going. So वो हमारे भी प्रधानमंत्री है. But at the same time, today's entire media has covered stories on what discussion is the Honourable Prime Minister going to have on tariffs of India. I really want to know, why are we preempting the situation of tariffs? First of all, लोग तो वापस भेज ही रहे. उसके बाद, how are we going to react to tariffs? Like he talked about the money coming from those various tariffs, US aid, वो political मैं नहीं उसमें पढ़ना चाहती, लेकिन health के लिए over 1,000 crores of good money. यहाँ अनुप्रिया जी बैठी है, वो पहले हेल्थ मिनिस्टर हुआ करती थी. नड्डा जी से पूछ लीजिए, उनके पास अभी भी है, तो वो है अभी हेल्थ मिनिस्टर, उनसे पूछ लीजिए. over $114 million comes in aid. भले वो टीबी के लिए हो, सब पे. मेरा सिर्फ कहना है कि US aid is a good thing, but we must not write it off just कि it comes for political is my only thing. I compliment the Honourable Finance Minister on the income tax decision, but I hope she thought also about GST when she was thinking about income tax, this rebate, because अगर she had given some relief in GST in many ways, states को भी अच्छा होता and all the consumers would have benefited. Sir, capex, Krishna talked about capex extensively. I want to just remind him that the capex has been stuck at 21%, 5 of total expenditure for the last 3 years. This is the reality of Anurag Thakur's Viksit Bharat idea that he is going on and on about. The capex, the government capex and GDP ratio in 24 was 3.21%, and in this year 26 it is declined to 3.1%. Household debt, this is not my number, ये सारे RBI के number है. Household debt has risen, sir, बढ़ा है by 41%. Manufacturing is the same details which Dayanidhi Maran has spoken. I will not get into it. If foreign investments, he was talking about investments. Sir, foreign investments have been on a selling spree. बेच रहे हैं, बाहर जा रहे हैं देश छोड़ के, and the net sale of USD 11 billion
in FIIs in Q3 in 24-25. Trade deficit has reached USD 188 billion. तभी तो ये हाल है रुपये का. My question too is, why are people leaving India? Because they are looking for better emerging markets and the weakening of Indian rupee. So when is this government going to think and introspect out why is this repeating? Another thing, the national debt of this government, which Manish Tiwari ji has already spoken about, but I'll repeat, 58.6 lakh crore in 2014. It is now over 171 lakh crores. Can somebody give me an answer for this? Expenditure cuts, sir. Every year there's the government spending fraud. 2022 was 16.03. In 24 has come down to 15.04, and now it has come to 14.9. This fiscal consolidation के बारे में इतना है सरकार बोल रही है, that is because of these expenditure cuts and cuts in healthcare, in education. They have to clarify. Even no fiscal discipline, जिसके बारे में अटल जी की सरकार ने FRBM एक्ट जब लाया था, फिजिकल मैनेजमेंट के लिए अच्छा सबने करना चाहिए, राज्य ने भी और देश ने भी. इन दैट एलोकेशन ऑल्सो सर देर आर डिपार्टमेंट्स आफ्टर डिपार्टमेंट्स, BENRE, माइनॉरिटी अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स, सोशल जस्टिस, जल जीवन मिशन में तो सर ओवर 41% इज नॉट स्पेंट. It's the flagship program of this government. Can somebody tell me, just now Anurag Thakur ji said, scam Bharat to Saksham Bharat. I want to ask him, why is this program stopped? Every MP sitting here, not on this side, that side was also saying that Jal Jeevan Mission is not implemented, it is stopped. The Honorable Minister has been very kind and saying that. The social sector expenditure. Sir, while fiscal deficit करने के लिए RBI से dividend लेते हैं, परसों RBI was always at an arm's length. It was an independent body. Today the Honorable Governor, I should not say this about him, but he was very generous in his opening line the other day. हम सरकार को help करेंगे. Sir, for fiscal management, UPA की सरकार जब थी तब 5,000 करोड़ रुपया RBI के डिविडेंड से लिया था, और जब सरकार गई थी 14 में 52,679 crores was what RBI's dividend was giving. Sir, do you know how much it is today? Today 2.5 लाख करोड़ रुपया डिविडेंड आज RBI ने इनको दिया है. इसी से अब भी फिजिकल डेफिसिट मैनेजमेंट इस सरकार की हो रही है. कोई बताए हमें, और अगर नंबर्स गलत हो तो आई एम विलिंग टू यील्ड माय आर्ग्यूमेंट. टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर, they spoke one small point. I stand, it is something I've read in the newspaper. They are going on and on about Bihar. संजय जायसवाल जी और अनुराग ठाकुर जी, आप भी सोचिए और पता करिए. they are all going on about this makhana. I want to inform them that there is media which I am willing to table on I will table this. The information of makhana board in Bihar, for example, there already exists a national research center for makhana in Bihar's Darbhanga. There is no regular director there, and for the last 5 years 3.4 crores is spent. Sir, here is the document. I am happy to table it. Please कोई बताए इनका क्या हो रहा है. Then you talked about what scam Bharat, Saksham Bharat. The other day, the Honorable Prime Minister explicitly spoke about DBT, direct benefit transfer. I welcome it. He made an offer to the entire opposition कि देश की उन्नति के लिए सब साथ हो जाए. We will stand by the Honorable Prime Minister if he truly walks the talk, because this is one question I want to ask the Honorable Prime Minister. Sir, 2-3 very short points. Sir, there was a murder of a sarpanch in Bid, Maharashtra, where I just जहाँ से मैं आती हूँ उस राज्य में एक बीड में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक सरपंच का खून हुआ. क्यों सर खून हुआ वहाँ? क्योंकि वहाँ एक अवधा नाम की कंपनी है, उसका एक्सटॉर्शन हो गया, इसके कारण खून हो गया. उसके बाद क्या पता चला? दैट इज इंटरेस्टिंग, एंड दैट्स द स्वच्छ भारत एंड विकसित भारत. आई वांट टू आस्क अनुराग ठाकुर, ही इज कॉलिंग अस स्कैमस्टर्स. आई वांट टू आस्क हिम दिस क्वेश्चन विद फुल, बड़ी विनम्रता से मैं पूछना चाहती हूँ 3 सवाल उनको टू दिस गवर्नमेंट. PM किसान योजना, आप फाइनेंस सरकार को पूछती हूँ, मैं सरकार को पूछती हूँ. 3 ही छोटे से सवाल है कि इन्होंने DBT के बारे में प्रधानमंत्री किया, बहुत अच्छी बात है. महाराष्ट्र में DBT का इन्होंने रूल तो मिला कि सब किसानों को सब DBT में मिलेगा, ये बहुत किसानों की सरकार है. DBT रिवर्स किया, सरकार ने निर्णय लिया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि हम DBT नहीं करेंगे, सरकार खरीद करेगी. और कैसे खरीद की? हार्वेस्टर्स जो यहाँ से पैसा जाता है ना, वो बोला DBT से नहीं जाएगा,
मंत्री देगा। और मैं आपको बताऊं, नैनो यूरिया, निशिकांत जी को बहुत अच्छा लगता है, बहुत बार नैनो यूरिया के बारे में बोले, तो नैनो यूरिया की एक बॉटल ऑनलाइन या रिटेल प्राइस है 92 रुपीज। महाराष्ट्र सरकार ने कितने में खरीदी? 220। एंड बाय द वे, आई हैव गॉट दिस, आई विल ऑथेंटिकेट एवरीथिंग आई हैव सेड, आई एम हैप्पी टू टेबल एवरीथिंग। Then nano DAP bottle 269 is government has bought for 590. Cotton storage bag 577 sir की bag 1200 रुपया sir, I repeat, cotton storage bag 577 1200 rupees. Methadone 817 bought for 1275 and battery spare 249.6 is bought for 3425. और हमको स्कैमस्टर बोलेंगे इसका आप? जवाब कैसे देंगे? सर, दे हैव टू रिप्लाई फॉर ऑल दिस। सरकार को जवाब, जब प्रधानमंत्री डीबीटी के बारे में, सर जब प्रधानमंत्री डीबीटी के बारे में बोल रहे तो उनकी डबल इंजन की सरकार क्यों नहीं सुन रही है? डीबीटी होना चाहिए, वी विल स्टैंड बाय द गवर्नमेंट डीबीटी, बट डज इट गिव द राइट टू द गवर्नमेंट टू डू दिस? सर सर, टू वेरी स्मॉल पॉइंट्स, बैंकों के बारे में बहुत इन्होंने, वन मोर सर, वेरी स्मॉल पॉइंट, कृष्णा स्पोक एक्सटेंसिवली अबाउट सेस। अभी नए आए हैं, मैं उनको सिर्फ बड़ी विनम्रता से बोलना चाहती हूँ, बड़ी बहन के नाते, कि इन्होंने कहा कि टैक्स में बदलाव लाया है, सेस बढ़ाया है, पर मैं उनको कहना चाहती हूँ, जब टैक्स था ना तो सरकार को, स्टेट्स को भी मिलता था, सेस सिर्फ सेंट्रल पूल में आएगा, तो सस्ता कुछ नहीं होने वाला। ये आला है इसलिए थोड़ा प्यार से मीठे से बोले, मैं जो फैक्चुअल उनको बोलना चाहती हूँ कि योर टैक्स 37 आइटम्स विच गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड फ्रॉम टैक्सेशन बट द सेस इज एडेड, तो कैसे सस्ता होगी? महंगा तो वही रहा, सिर्फ जो राज्य को मिल रहा था वो शिफ्ट हो गया। आज तो उन्होंने बताया ना कि उनका बजट कितना, बट इट डजंट हेल्प सर। सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, एंड लाइक हिज स्टेट, मैं जिस क्षेत्र राज्य से आती हूँ, महाराष्ट्र में आज 1 लाख करोड़ का डेट है, पेमेंट्स नहीं हुए, रास्ते का काम बंद है, जिस बारे में आज वो प्रणीति शिंदे जी भी बोल रही थी। सही है सर बात, 1 lakh crore, and now with all these schemes, the whole debt is going to be 2 lakh crores. What is central government going to do to fiscal deficit management of our states? One last, sir, very short point. Sir, I just want to ask, they were talking about very good development of IDBI bank. So they are saying banks are doing wonderfully. I agree with you. They are doing well because they've consolidated. They're merging many banks. That's why the position is good. But अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए. मैंने इतना टिकड़ा टिकड़ी तो अच्छा तो जरूर बोलेंगी कुछ तो बैंकिंग में अच्छा किया है, सही बात है. But I want to ask this government one very small and a very important question कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ IDBI बैंक फाइनेंस मिनिस्ट्री करेगी या सरकार करेगी? हाँ या ना में ही मुझे जवाब चाहिए. इसका कारण सर ऐसा है बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द पार्लियामेंट. जसवंत सिंह जी जब मिनिस्टर थे, इन 30 सेकंड सर, जसवंत सिंह जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कमिटमेंट किया था कि IDBI अगर हम कभी भी डाइल्यूट करेंगे तो वी विल पास इट थ्रू द पार्लियामेंट. Now they are not doing that, sir. What Reserve Bank has, they had first classified it, it was in infrastructure, then it came into banking. So now the government, which now owns 45.48% stake in IDBI, now they are looking to divest this of 30.48%. So that means 61% of bank shares will go into private hands, sir. So government, and don't, my only point is you want to divest, bring it, follow the rules. आप parliament में आए, because Jaswant Singh ji had said it on the floor of the house कि हम आगे, then what is the sanctity of having this parliament if this government will do what they want? So I urge this government, all is not good. The economy is slowing down. You have given a good tax rebate. I welcome that, but at the same time, I'm not sure it's going to deliver superior results as the government is expecting. I request the government introspect. Just by winning elections does not mean all is well. Thank you. हाँ जी. अरे रूल है, मेरा नाम लिया है सभापति जी. नहीं, नाम रेफरेंस में लिया है, कोई सभापति जी. नाम नहीं है. 114 करोड़, 114, उनकी बात मान लें कि 1 लाख करोड़ के हेल्थ बजट में 114 करोड़ यूएस एड देता है, तो क्या मुंबई में जिसने अटैक किया 2008 में हाफिज सईद को यूएस एड पैसा देती है? क्या सुप्रिया जी को बम्बई के लोगों के बारे में नहीं पता है कि यूएस एड ने हाफिज सईद को और बॉम्बे? आपकी बात आ गई, आपकी बात है श्री गुरमीत सिंह जी, श्री गुरमीत, आपकी बात है ये. धन्यवाद सभापति जी.
तिवाड़ी साहब, श्री गुरमीत सिंह जी, गुरमीत सिंह जी और तिवाड़ी साहब बैठ जाओ, सिंह जी, बैठ जाओ सर, बैठ जाओ, बैठ श्री गुरमीत सिंह जी, श्री गुरमीत, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट। धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, जितने आप बोलिए, आपकी बात सत्ता पक्ष के लोग बोले, एक ही बात दोबारा कही गई कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की सबसे 5वें नंबर पर पहुंच गई है। बहुत अच्छी बात है सर, हम तो चाहते हैं कि भारत पहले नंबर पर पहुंचे, लेकिन सर पर कैपिटा इनकम में भारत कहां खड़ा है? 1990 के दशक में भारत जीडीपी में 17वें नंबर पर था और आज 5वें नंबर पर है। लेकिन सर पर कैपिटा जीडीपी उस समय हम 1990 में 161 नंबर पर थे और आज भी 159 नंबर पर हैं। सिर्फ सर 2 रैंक हम नीचे आए इतने 35 साल में। और सर हमारा पड़ोसी मुल्क चीन, उनकी जीडीपी में वो 11वें स्थान पर थे और आज दूसरे, और पर कैपिटा जीडीपी में वो उस समय 198वें स्थान पर थे और आज 75 पे पहुंच गए। लेकिन सर हम आज वहीं अटके हुए हैं, क्योंकि सर हमारे देश में जो इनकम बढ़ रही है वो कुछ ही % लोग हैं जिनकी इंक्रीज हो रही है। सर पिछले 10 साल से, जब से बीजेपी की सरकार है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उद्योगपति, उनकी इनकम 18.3% से बढ़ रही है और सर जो देश का आम नागरिक है उसकी इनकम मात्र 8.9% से बढ़ रही है। और सर एक्सपेंडिचर 9.5% से बढ़ रहा है। इट मीन कि आमदन 98 और खर्चा रुपया। एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि तेल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और जो आमदन है देश का जो आम नागरिक है उसकी कम बढ़ रही है। तो सर ये बात जो सारे जितने सत्ता पक्ष के लोग हैं कह रहे हैं जी 12 लाख तक टैक्स माफ कर दिए, इतने लोगों को फायदा हो गया, इतने लोगों को फायदा हो गया, पर सर सच्चाई ये है कि मात्र आज भी हमारे देश में सिर्फ 10% लोग हैं जिनकी प्रति महीने इनकम 25,000 से ज्यादा है। तो सर आप देखिए कितने लोगों को ये बेनिफिट पहुंच रहा होगा। और दूसरा सर सुप्रिया जी ने भी बात की, जितने हमारे सांसद उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले जो हमारा रुपया है वो 85 से ऊपर चला गया। मैं सर सदन को याद करवाना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि रुपया आईसीयू में पहुंच गया है, अस्पताल में है। 14 से पहले ये रुपया नहीं घट रहा, देश की आबरू घट रही है। तो सर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब रुपया आबरू नहीं रहा? जो 65 पर रुपया आईसीयू में था तो सर अब 87 पर पहुंच गया। अब वो रुपया कहां है? आपका डॉक्टर ने कह दिया कि जी घर ले जाए, या तो सरकार कह दे कि जी अब कोई इलाज नहीं हो सकता, डिक्लेयर कर दो आप। सर ये मैं नहीं, पूरा देश सरकार से पूछना चाहता है। और सर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एआई की डिस्कशन हो रही है, क्योंकि सर जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था वो भारत आज भी डेवलपिंग नेशन में इस लिए है क्योंकि जो अंग्रेजों के समय जब पूरे विश्व में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रही थी, हमने वो फेज पूरा मिस कर दिया, क्योंकि अंग्रेज कच्चा माल यहां से लेके जाते थे और प्रोसेस वहां ब्रिटेन में जाके करते थे। तो आज सर जरूरत है कि हम एआई पर इन्वेस्ट करें, जब पूरी दुनिया कर रही है। उसके लिए सर 4 कंपोनेंट हैं जिन पर मुझे लगता है कि हमें काम करने की जरूरत है। पहला है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो पूरे विश्व में हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज पूरे विश्व में सबसे यंग नेशन भारत है। दूसरा सर उसके लिए चाहिए कि जो कंप्यूटर में डोमिनेंट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और हमारे लिए खुशी की बात है कि आज जितने भारत के युवा हैं वो इंग्लिश बोल भी सकते हैं, ज्यादातर उनमें से पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हैं। और तीसरा सर जो ब्रिलियंट माइंड्स चाहिए। आज पूरे विश्व की जितनी भी बड़ी लीडिंग कंपनीज है उसमें चाहे गूगल हो, उसके हेड सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट हो,
उसके हेड सत्या नंडेला, IBM हो, उसके हेड अरविंद कृष्णा, और सर वर्ल्ड बैंक के भी हमारे पंजाबी हैं अजय बंगा। सर 3 कंपोनेंट पूरे हैं, लेकिन चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के राइट पॉलिसी फ्रेमवर्क जिस पे हमें काम करने की जरूरत है, और वो सरकार की बजट से दिख रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सिर्फ सर 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सर आज जो हमारे जितने यूरोप के देश है, जापान है, बिलियंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम सिर्फ 500 करोड़। क्या सर इस तरीके से हम जो दूसरे नेशन है उनसे कंपीट कर पाएंगे? तो सर मेरा सरकार से आग्रह है कि इसका बजट इंक्रीज किया जाए। और सर सबसे इंपॉर्टेंट सर मेरे प्रदेश पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर सरकार ने कहा डिवर्सिफिकेशन के प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। सर इसकी सबसे जरूरत पंजाब को थी। वो पंजाब जिसने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लेके आया, और सबसे बड़ा योगदान जिस देश को हम कह रहे कि जी आत्मनिर्भर हुआ, पंजाब ने योगदान डाला। लेकिन सर आज जरूरत थी, क्योंकि रेवोल्यूशन जो हम उत्पादन कर रहे हैं गेहूं का, चावल का, वो सर ऐसे ही नहीं हो गया। उसके लिए हमने अपनी धरती बर्बाद कर ली, हमारा पानी बर्बाद हो गया, हमारी वायु बर्बाद होगी। हमारे सर आज पंजाब में हर दूसरा घर है जिसमें कैंसर के मरीज है। आज जरूरत थी कि पंजाब को डिवर्सिफिकेशन में कुछ ना कुछ मिले, लेकिन आपने इनडायरेक्टली इसमें से पंजाब के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे पंजाब को उसमें से बाहर निकाल दिया। सो मेरा सर सरकार से आग्रह है कि पंजाब कृपया जिसका बहुत बड़ा योगदान है इस देश को आत्मनिर्भर करने के लिए, आज पंजाब के 2 मिनट सर, पंजाब के किसानों को डिवर्सिफिकेशन के लिए स्पेशल बजट मिले, ताकि पंजाब के पानी को, पंजाब की धरती को बचाया जा सके। और दूसरा सर बड़े दुख की बात है कि पूरे बजट में, जैसे लास्ट बजट में पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया, इस बार भी ना पंजाब का ना पंजाब के किसानों का। पिछले 3 साल से पंजाब के किसान प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, MSP की डिमांड कर रहे हैं, और सरकार ने लिख के दिया है, और उसका जिक्र तक भी इस बजट में नहीं किया गया। और सर इसके अलावा क्योंकि पंजाब में जितने हमारे नेबरिंग स्टेट है उनकी इंडस्ट्री के लिए कोई ना कोई स्पेशल पैकेज केंद्र सरकार देती रही है, लेकिन पंजाब को बॉर्डर स्टेट होने के बावजूद भी कभी कोई पैकेज नहीं मिला। तो सर मैं सरकार से आग्रह करूंगा अपने संगरूर के लिए, क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की इंडस्ट्री है, हमारे वहाँ से हंडियाया है, वहाँ से बल्कि ट्रैक्टर बाहरले देशों तक पहुंच जाते हैं। तो सर उनके लिए कोई ना कोई पैकेज, उनके बेनिफिट के लिए कोई GST में छूट, ताकि वहाँ की इंडस्ट्री ग्रो कर सके। थैंक यू सर। श्री मिथुन रेड्डी जी, श्री मिथुन रेड्डी जी, श्री मिथुन रेड्डी जी। Thank you, sir, for letting me talk on this union budget. Sir, the Honorable Finance Minister's decision to give income tax incentives for up to 12 lakhs is a welcome move. Though there is a reduction of 1 lakh crore tax revenues, I think it will have a ripple effect on the economy, and it will boost the economy. And sir, I would like to recall that the budgeted capex for 2024-25 is 11,11,111 crores. But if you see the revised estimate, it's 10,18,249, which is a reduction of 92,000 crores. And even this year, in spite of a big budget which has been announced, the capex budgeted for this year is 11,21,090 crores, which is only 0.89% marginal increase than the previous year. And if you see, sir, last year, the non-tax revenues basically depended on the revenues from the RBI, and it was 2,10,784 crores, which is not possible this year, and which is very unlikely this year. And also, whatever the government has planned to raise through disinvestment, they have achieved only 30% of the target. So this year, it's going to be very tough to keep up the capex expenditure. We urge the government to borrow more at least and see that the capex expenditure is not reduced, sir. And if you see Jal Jeevan Mission, the previous budgeted expenses was 70,692 crores.
But if you see the ground reality, sir, it's only 22,694 crores is the revised estimate. So there's a reduction of 47,000 crores, sir. If you, in Andhra, they are planning to call tenders for 50 to 60,000 throughout the country. They are taking up Jal Jeevan ambitiously. If it's only 26,000 crores is being spent, how long is this scheme going to take? It's going to take more than 10 years, and which is not in the right interest. We want the government to spend whatever is budgeted and even more also increase for Jal Jeevan. And sir, it's another important issue in our state I would like to talk. The finance minister in one of her replies in the question hour spoke about Saharas. She said that they collected funds against RBI norms. She said that there are a lot of beneficiaries or whoever depositors who have been unidentified, and they have diverted the money. And they have taken action on that. I totally agree with her decision. Sir, I want to know why Margadarshi is let off. They have collected 2,600 crores of deposits. They have diverted that, which is against the RBI norms. RBI has filed an affidavit saying that it is completely against what they have collected. So they have collected in cash, and the income tax department has slapped a notice of 1,000 crores, and which they went to the court and got a stay. Sir, this is one of the biggest scams. Law should be the same for everybody. Just because they have a media house, they should not be let off from scamming the people. Sir, this... Can you address it? It's okay, he already told Can you address it? He already told. Sir, Doesn't matter. every day, I've raised this issue every day. They are writing news about me. I'm not going to yield. I'm not going to budge. And I really don't care what they write. We are going to take this issue in a big way. Sir, we will fight it out. And we will see that justice is done, sir. There are lakhs of depositors who have been duped in this. This is not a proper thing. We urge the government to keep up their word. Where is this ED? Where is this serious fraud investigation? What is happening to them when such a big fraud has happened, sir? One thing, sir, everybody in the house, I will just tell you one thing. Just Google Margadarshi and their promoter name. You will find that person sitting in a golden chair, real golden chair, and you have ministers prostrating in front of him. This is how a scamster is projected in the government, sir. Sir, we need serious action. It is with public money. It's money they have duped. They are doing all this. Sir, we want the government to take serious action on this, sir. And Serious action. This is correct. Can you take it? sir, government should have the... Labu Sri Krishna, kindly Why are take you it. interrupting? Why are you Kindly interrupting? take your seat, please. Kindly you address to the chair, please. Sir, and one more thing, sir. One Kindly peculiar address to issue. the chair. I want my friends to Please, you respond on address this to also. chair. Few things. Kindly My address very to good friends from TDP are asking me to raise this issue. Sir, in the budget, the government announced 75,000 medical seats for the next 5 years, sir. There's one peculiar thing which has happened to Andhra Pradesh. Our health minister wrote to the medical commission saying, we don't want the medical seats allotted, take it back. What is this, sir? One way government is announcing that we are going to give 75,000 medical seats. This is not fair at all, sir. Sir, during COVID, Seats were sent back. we didn't have proper medical facilities, and our people were stopped at checkposts, sir, going to the other states for treatment. And our former CM, interrupt, Jagan Mohan interrupt, Reddy, did 17 medical colleges. He built 17 medical colleges, sir. And everything has been stalled now. Sir, the governments can change. But not the policies, sir. It should not affect the poor people. A lot of people in my constituency are coming to me, sir. They are going to Ukraine, they are going to Philippines, they are selling their properties for going and studying medical education. In one way, there are 17 medical colleges under construction have been stopped in Andhra Pradesh, and the people are suffering. Sir, this is not at all a good thing. They are saying PPP, where's the thing? So the priorities of the government is healthcare and education. Sir, this government is neglecting this in a big way. I urge the finance minister, if they are not able to handle it, at least the finance minister should step in and make sure that funds are provided for these medical colleges. They should not stop because somebody has started it, sir. Sir, I respect Puranjeshwari ji. I have one request, sir. Her heart is in TDP, physically she is in BJP. Till now, people were shouting at Modi ji, she didn't respond.
I am talking about Chandrababu Naidu. She is responding. You Please make address a to the seat chair. TDP people, sir. I think so. You should not mention the name. Sir, Labu. one thing I want to ask the government, sir. Chair. Polavaram is a very important issue. Polavaram is a very important issue. In the budget, who has asked for reduction of the capacity of Polavaram, sir? Polavaram, in the budget, they have mentioned that the capacity of Polavaram is going to be reduced and the water level is going to be 41.15 meters, which means that the capacity of Polavaram is going to be reduced more than half, sir. And they have pegged the expenditure at 30,000 plus crores, and they're going to release only 5,000 this year and 5,000 next year. Does that mean that a national project which is costing 60,000 crores, you are going to give only 30,000 crores? What is going to happen to the other 30,000 crores, sir? One way, they are celebrating the loan which has been given for Amaravati for 15,000 crores, and the other way, they are losing the grant, sir. I'm asking my friends from TDP, you instead of shouting at me, go and shout at the government officers, go and make sure that money is coming, sir. If you have the guts, go and do. We are ready to come with the TDP, sir, for the state interest. Sir. The railway zone which has been given to us after 10 years, sir, it has been mentioned in the AP Reorganization Act. After 10 years, we have got the railway zone, sir. And in this also, the Walter division has been split into two, and the Walter division has been split, and we are not getting it completely. This is total injustice to Andhra Pradesh. We demand the complete Walter division be part of the railway zone given to us, sir. Sir, and one thing I want to ask the finance minister straight, sir, through you. Are you going to privatize the Visakhapatnam steel plant or not? We oppose privatization of steel plant. We want a statement on this regard, sir. Complete statement. Thank you. Sir, and one more thing, sir. Finally, one thing I want to say. Our current chief minister proudly says that we have 16 MPs, and because of us only this government is there in Delhi, sir. There are only 12 in Bihar. They are getting more. Here we are losing money for Polavaram. Here we are not getting the Wanted division also. Here, most of the things in AP Reorganization Act are not happening, sir. Thank you. Thank you. We want answers, we want action. Thank you. And we demand the government not do injustice to Andhra Pradesh. Thank you, Midinji. Sir Shampi. Thank you. Mr. Shampavi. Mr. Shampavi. Please. No, your turn will come from your party. Honorable member, you are a senior member. Wait. You are a senior member. If you want to react for each and every member from the treasury benches, we cannot conduct the house. Please, whatever be the allegation made by him can be counted by other member in your alliance. Please. धन्यवाद सभापति महोदय. I will look into. Anything unparliamentary, you tell me, please. धन्यवाद. Honorable. I will correct it. धन्यवाद सभापति महोदय. Please. धन्यवाद सभापति महोदय. आज अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इस आम बजट के समर्थन में अपने पार्टी का जो पक्ष है उसको रखने के लिए खड़ी हुई हूँ. बधाई दूंगी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना 8वां बजट इस सदन में पेश किया है. पूरे बिहार की ओर से उनका आभार व्यक्त करूंगी, वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करूंगी कि जब वो बजट को इस सदन में प्रस्तुत कर रही थी तब वो बिहार की बेटी पद्मश्री दुलारी देवी द्वारा जो उनको मिथिला पेंटिंग की साड़ी भेंट की गई थी वो पहनकर वो अपने बजट का भाषण दी थी. इससे बिहार का गौरव, बिहार का सम्मान बरकरार रहा है. 2037 तक विकसित भारत के निर्माण में सर ये बजट एक अहम भूमिका निभाएगी और सिर्फ भारत को विकसित बनाने में ही नहीं, बिहार को भी विकसित बनाने में और बिहार के विकास को एक नई गति प्रदान करने में ये बजट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी. कहीं हमने पढ़ा था कि द बी इन द बजट स्टैंड्स फॉर बिहार, और ये बात सत्य है कि आज बजट का बी बिहार के लिए, क्योंकि जब विपक्ष की सरकार थी तो बीमारों का बी बिहार के लिए होता था. हमने वो लंबा सफर तय करके आज एनडीए सरकार की वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं. पूरे विश्व को शून्य देने वाले आर्यभट्ट
जो पूरे विश्व को शून्य दिए थे, उनका जन्म बिहार में हुआ था और ये वही शून्य है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आई थी। और अगर आज बिहार को 2 शून्य अधिक मिल रहे हैं तो विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? जिस सरकार ने बिहार में विकास लाए हैं, बिहार हमेशा उनका आभारी रहेगा। हम उस बिहार की बेटी हैं सर जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, वो चाहे आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स हो, वो चाहे आपके सॉफ्टवेयर आईटीज हो, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने वाले मजदूर हो, वो आपके घर के सहयोगी हाथ हो। हर घर में सर एक बिहारी है, आपके घर को घर बनाने वाला आदमी बिहारी है। बिहार का उत्थान अब अडिग है और बिहार के विकास में अब कोई भी बाधा नहीं आएगी। रीजनल फेवरेटिज्म की बात करते हैं सर, 2004 में डीएमके पार्टी के समर्थन के लिए तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था और उसके लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की थी। तब बिहार वासी को और बिहारियों को कोई दिक्कत नहीं था, पर आज जब बिहार को ज्यादा मिल रहा है तो विपक्ष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बिहार में आज जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट जब विपक्ष की सरकार थी तो बिहार में जीडीपी का मतलब था गुंडागर्दी, डकैती और पॉवर्टी। हम बिहार में जमीनी स्तर पे काम करते हैं, इन लोगों ने बिहार में जमीन हड़पने के लिए काम किया है। हम दोनों में बस यही अंतर है। संविधान विरोधी कहते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी जब राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में बोल रहे थे तो जितने बार उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया था उससे ज्यादा वो चाइना के बारे में बात कर रहे थे। और ये इनका एक ट्रेडिशन रहा है कि चाइना के मॉडल से ये बहुत प्रभावित रहते हैं। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी चाइना से प्रेरणा लेकर के ही स्थापित की गई थी। हम राहुल गांधी जी को बस यही कहना चाहेंगे, राहुल गांधी जी, ज्यादा चीनी देश के लिए और सेहत के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। इंडिया अलायंस को देखते हैं सर तो एक गाना याद आता है, इंडिया अलायंस को देखते हैं तो एक गाना याद आता है, देख जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। और बिहार इलेक्शन विल बी द लास्ट नेल इन इंडिया अलायंसेस कॉफिन। इसके बाद इंडिया अलायंस वैसे ही इस धरती पर से विलुप्त हो जाएगा जैसे किसी समय में डायनासोर हुए थे। अगर हम बजट की बात करें तो वित्त मंत्री जी ने 50 लाख करोड़ का बजट दिया है, जिसमें 11,21,000 जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये हमारे देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाएगी। वित्त मंत्री जी ने अपनी भाषण की शुरुआत ही सरकार के एफर्ट्स को रेखांकित करते हुए कहा कि इस बजट का फोकस्ड ग्रोथ पे है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे है और एनहांसिंग स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइडिंग मिडिल क्लास पे है। ये बजट एक गाइडिंग फोर्स के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा और ये इस बजट का ही परिणाम है कि इतने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी हमारा देश एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माय पार्टी, मेरे को अपनी बात पूरी करने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए। नो नेशन कैन प्रॉस्पर विदाउट रिस्पेक्टिंग इट्स फार्मर्स। किसान हमारे अन्नदाता है, अन्नपूर्णा देवी का साक्षात स्वरूप हमारे किसान है। काफी सारी ऐसी योजनाएं जो आत्मनिर्भर विचारधारा से किसानों को सशक्त करने के लिए लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हो, जो 100 जिले जिसमें कम उत्पाद होते हैं वहां पर लगभग 150 करोड़ किसानों को ये योजना जो है वो फायदा देगी। वो फसल विविधीकरण हो, सिंचाई हो या ऋण उपलब्ध कराना हो, इस योजना के तहत किसानों को सशक्त किया जाएगा। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत किया जाएगा। आर्थिक रूप से उनका सशक्तिकरण होगा। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। सर, आई एम द ओनली स्पीकर फ्रॉम माई पार्टी सर, आई हैव इनफ टाइम, आई नो। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के तहत तूर, उड़द, मसूर दाल जैसे जो उत्पादन है उसको भी पूरा किया जाएगा। आप कम समय दे रहे इसीलिए हम फोकस पे आते हैं। दलितों का उत्थान के लिए सरकार ने क्या काम किया। पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल ने अपनी किताब दलित देवो भव में लिखा था, जिस दिन समता की आधारशिला पर बनेगा सुदृढ़ वितान, धन्य होगा यह देश और संगठन हमारा होगा अत्यंत महान। जब भारत के भाल पर सुशोभित होगी जाति समता की पताका, तब मिटेगी इस देश की दारुण दुखों की राका। इसी को आधारशिला बनाते हुए, एक सेकंड सर प्लीज,
एक सेकेंड सर, लेट मी कंप्लीट। इसी को अपनी आधारशिला बनाते हुए दलितों के लिए बहुत काम हुआ। उसके कुछ आंकड़े हैं जो हम पेश करना चाहेंगे। महिलाओं को अनुसूचित, जो महिलाएं अनुसूचित जाति जनजाति से आती है, उनको पहली बार ऐसी 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिनको 5 साल में 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। दलितों के लिए दलित जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। Thank you. Please conclude. Please conclude. Give me 5 minutes, sir. Please let me complete. It is not possible. 10 parties. Please, madam. 10 parties together have been allotted only 17 minutes. Already you took 7 minutes. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 2024 में लगभग 4.5 लाख ऐसी छात्रों को 5 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई है और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 18 लाख छात्रों को 437 करोड़ की राशि दी गई है। सर, अनुसूचित जनजाति बिहार में लगातार जातियों को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया था जब विपक्ष की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी बेलची गांव गई थी हाथी पे चढ़कर, उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके लाभ के लिए दलितों को प्रताड़ित किया गया। जब लालू यादव जी आज समाजवाद पे बहुत लंबे भाषण देते हैं, पर ये बात सत्य है कि अगर सबसे ज्यादा दलित को प्रताड़ित किया गया था तो वो उन्हीं की शासनकाल में किया गया था। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का आभार व्यक्त करते हैं जिनके प्रयासों सर 5 मिनट्स जिनके प्रयासों के वजह से आज निफ्टन जैसे जो इंस्टीट्यूट है वो बिहार में आ रहे हैं और आने वाले समय में बिहार ईस्टर्न हब में एक जो फूड प्रोसेसिंग है उसका एक नोड बनेगा। IIT पटना को विस्तृत किया जाएगा। सर 2 मिनट। थैंक यू। प्लीज सर प्लीज 4 पंक्ति पढ़कर हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। सर, बिहार के गौरव को और बिहार की जो इतिहास रहा है उसको बार बार इस सदन में उछाला जाता है। बिहार के खिलाफ कई सारे बात विपक्ष कहते हैं। 5 पंक्ति सर हम पढ़ेंगे। चाणक्य सा ज्ञानी हूँ मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूँ मैं, मांझी सा जिद्दी हूँ मैं, बोध गया में सिद्धि हूँ मैं, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूँ मैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिज्ञ हूँ मैं, शेर का दहाड़ हूँ मैं, हाँ बिहार हूँ मैं, मिथिला की मिठास हूँ मैं, वैशाली का इतिहास हूँ मैं, मगध का साम्राज्य। Thank you, Chairman, sir. Please. India is the queen of all countries. Please. Our country is always beautiful, developed and developing itself in each year after independence in terms of heritage, culture, education, archaeology, mentality and role model of religious unity. India is widely considered and one of the best and oldest living civilization with evidence of quality life and stable economy in the world dating back to at least 8000 BCE. Sir, who will get the credit of this development, beauty, each and every year? Who will get the credit? The peoples of the country will get the credit. Because of the peoples of the country's contribution, India has been developed. No one single person can claim that because of him the India has been developed. Whether any budget has fulfilled the expectation of the people, the immediate test is the stock market response. Sensex and Nifty have maintained a flat benchmark in the stock market for the last 10 days and has not affected the market growth. Even rail stocks, including RVNL, which would have been one of the biggest beneficiaries of the capex hike, saw a significant decline of up to 9%. Following the union budget, a significant budget. This proves that the budget for 2025-26 has neglected the challenge of the economy and the common demands of the people. It has not met the expectation of market participants, leaving the critical common issues unresolved. With public debt at nearly 80% of the GDP and interest payments consuming a quarter of government revenue, this budget is shocking and fiscal betrayal to the people, as well as strategic failure in driving economic growth. The budget is anti-people and destructive for India's economy.
The Union Budget 2025-26 has failed to address several key economic challenges, including currency depreciation, declining markets, but a bold push towards the complete privatization of the economy to private players. Sir, in 2014-15, the government promoted a composite cap on foreign investment, raising it to 49%, which has now replaced by 100%. The question is whether the entire population will be covered under insurance and medical treatment insurance facilities at the 1 rupee premium cost or not. In 2019, the penetration of both life and non-life insurance in relation to GDP was 3.7%, and it remains the same in 2024 due to absence of a people-friendly claim and policy mechanism. Another crucial question regarding FDI in insurance is the government's policy on LIC and other public sector insurance companies. How long will they retain publicity secured and free from disinvestment process? The GST has not been reduced in the insurance sector, while 100% foreign investment is not allowed in the sector. Our Chief Minister, the Chief of the Trinamool Congress, Mamata Banerjee, is opposing FDI in insurance since 2012 and dead shot against increasing of foreign investment cap in insurance sector to 100%. She expressed her concern about the plight of people's deposits in LICI and other public sector, that is the existence of such institution might be at stake in future. Our Honorable Prime Minister always speaks about reform, perform, transform, but he seems to be acknowledging what his government has failed to do. The budget ignores the immediate challenges of growing unemployment, inflation, inequality. The labor share of GDP dropped from 49% 2017 to 45.2% in 2023. In terms of the 2025-26 budget and the 2019-20 budget, we can see that 2019-20 in the borrowing and other liabilities 20%. It has 24% now. Non-tax revenue 9%, same 9%. Customs 4% remains same 4%. Corporate tax 21% reduced to up to 17%. GST 19% reduced to 18%. Union excise duties 8% reduced to 5% now. Income tax 16%, now it is 22%. Non-debt capital receipt 3%, it has reduced to 1%. Rupees goes to interest payments 2025 and 2019 and 20. 2019 and 20, 18%, now 20%. 23%, 1920, now 22%. 9%, now 8%. 8%, now centrally sponsored scheme, 9%, now 8%. Subsidies, 2019-20 was 8%, now it has gone down to 6%. Defense, 2019-20 it was 9%, now it is 8%. Finance Commission and Transfers, 7%, now it is 8%. Other expenditure, 8%, 8%. Pensions, 5%, it has reduced to 4%. Central sector scheme, it was 13%, now it is 16%. The data clearly shows that interest payments but not repayment of foreign loan compromises with spending on centrally sponsored schemes, subsidies, pension. The country's external debt has risen to rupees 60.82 lakh crore in 2025 compared to 39.5 lakh crore in 2019. Second, complete budget on second term, it was addressed in 2019. Now, complete budget, they are delivering in 2025. Now, therefore, see how it has been reduced in their regime itself. Sir, furthermore, loans and foreign borrowings are proposed to increase by 2%, a move towards reading with a huge debt. Before I go into other arena, sir, I want to point out that in the recent past, I came to understand that functioning of NCLT and NCLTs are not in line with the objective of code. Promoters are delaying the process directly and indirectly making the more litigation in the CIRP and liquidation proceeding. It is noticed that NCLT and NCLTs are not providing judgments in time. They are reserving the orders for months after months.
I would like to know how many orders are reserved across India as on today, and for how many days these orders are pending to be pronounced. What is the message the NCLT judges are trying to convey by holding these orders? Sir, by increasing the income limit for deal tax to rupees 12 lakh, around 1 crore taxpayers who are previously required to pay taxes will now pay none. Total expenditure as a proportion of GDP is projected to decrease from the current 14.6% to 14.2%. Only 2.8 crore income tax payers will benefit from the income tax exemption announced for next year. This is only 22% total number of salaried workers in India and has no relevance to maximum working class people of the country. They are speaking about the maximum class, the working class. Working class, only 22% will get this benefit. Rest will not get the benefit. Working class will not get the benefit. Sir, allocation of Manrega has been reduced to 86,000 crore from rupees 89,153 crore in 2023 to 24. Lesser allocation in Manrega and PM Kishan indicates stagnation. Sir, what did this budget do? Social service has been reduced by 16%. Housing funds have been cut by 4.38%. Spending on social welfare and scheduled caste and tribes development has been reduced by more than 3%. Most importantly, the budget allocation for food subsidies has been reduced by 4%. There is nothing for youth, women and farmers in this budget. Regarding social sector spending, total net receipts for the center are estimated rupees 28.37 lakh crore, while total expenditure stands at rupees 50.65 lakh crore, signaling continued fiscal constraint as of December 31, 2024. Sir, Amrut revised for now. I will speak about the revised estimate cost and fund released. Samagra Shiksha fund estimated 2024-25 37,010 rupees, released 17,605. Amrut 6,000 revised, funds released 4,158. Swachh Bharat Mission Urban 2,159, released 1,346. Jal Jeevan, it has been reduced to 2,087. Unemployment, the economy requires 78 lakh new non-farm jobs every year, but there is no clear roadmap to achieve this. Sir, as reported by Economic Survey, 2000 average monthly real earnings of self-employment men drop rupees 9,454 and 2023-24 8,598. If I read all the data, even in the agriculture field, everywhere, this is reducing. Sir, regarding child development, those are the three important arenas. I will look into that. Regard 35.5% of children under 5 years of age are stunted. The material mortality side is at 97% 1 lakh. Sir, I will be talking about very important issue which is appealing to my mind, that women empowerment. Women empowerment. Sir, the crystal of the women empowerment depends upon economic independence and financial independence. If the economic independence and financial independence of the woman is not there, there cannot be any woman empowerment. What we have to do, we have to take pathways to educate all the girls, children of this country. Unless they are educated and services are provided, this woman cannot be, woman empowerment will be an unsuccessful slogan. Sir, from my political, professional and personal experience, I can say, sir, the woman of the country is really in danger now. Today's result is not good. It is everywhere. Everywhere it is. That the concept of marriage has almost gone. That bonding is not there. All that, everything is gone. Every woman, almost 70% women are divorced. They don't know how to maintain their livelihood. We have to do something for them.
This is there should be an effort by everyone. I will say, sir, rather I will say to this house, to the girls, women of this country, please, first you stand yourself on your own feet. Think about the marriage later on. Marriage is one of the requirements of the life. I can understand that. But education is a compulsory. Besides that, sir, I have only spoken for 10 minutes. Please address. I have only spoken for 10 minutes. Please. Sir, now this is there it is required. We have to make all we have to make it. How we will do it, we have to decide it. And we have to do something for the women, and we have request you kindly do it. Sir, I am tourism. In a significant boost to tourism, the budget has allocated funds for the development of the top 50 tourist destinations in partnership with state governments through a challenge mode, which is positive approach. However, after spending over rupees 2,500 crore on the 45-day long Prayag Maha Kumbh Mela, the government has not taken a visible action regarding the massive and unfortunate stampede on January 30, 2025. There is no clarity on the postmortem reports, the number of deaths, compensation for the affected families, or the issuance of a death certificate. Why the central government has not taken any action or initiated inquiries into the negligence of the local state government? You have made it is an internal issue. It is not no longer a state issue. The way the advertisement have made, this Kumbh Mela has been made an internal issue. Then in that case, why there should not be an inquiry by the central government itself? Why? That it should be done. One JPC should be constituted by this parliament for looking into this complaint of the Kumbh Mela, sir. You are already two JPC. You are already two JPC. One is finished. By quickly he has finished it, but the report has not come. Anyway, sir, now I am coming to Milord, sir. Sorry, I am coming to the issue, sir. The Honorable Finance Minister has given much benefit to Bihar. We don't have anything to say. Any objection? No objection. Bihar needs it. Bihar should get it. But why you have neglected Bengal? That's our question. No scheme has been introduced for Bengal's development. Systematically, central financial benefits have been withdrawn for Bengal for one reason or other without any foundation. In this background, I want to say, sir, Bengal Global Business Summit 2025 was held in the last week under the leadership of our Honorable Chief Minister. Number of countries attended 40 plus. Some of the countries are Bhutan, Germany, Japan, Kenya, Malaysia, Morocco. There are 40 countries are there. United Kingdom. Sectoral sessions was 16 on different subjects. Country sessions was 6. Bhutan, Japan, Germany, Poland, Malaysia, Netherlands. Exhibition at Vishwamangala Mela program was 215 stalls covering key sectors. Top exhibition, Government of Jharkhand, ITC, RPSG Group, Titagarh Railway Station, ONGC, Jupiter Wagon, Pattern International, Ambuja Neotia Group, Kolkata Port Trust, Everyday TCS Manipur Hospital, JIS Groups, etc. Investment and impact. Total investment proposal now has come only in 2 days, last 2 days. Please. That is 4,40,595 lakh crore. Please. 4,40,495 lakh crore. Sir, I am not naming one big industrialist who has said, very famous, recognized, gentleman industrialist I am speaking about. I am not taking about his name. He has said the Bengal is the place where the industry will be developed.